Alok sir. I welcome you all to the second and the last session of our 100th Foundation Day. And here we have with us our director, Professor Sukumar Mishra, and with him has joined our special guest, Shri K.E.N. Raghavanji. We welcome you, sir. This session will comprise three important elements. One is the centennial announcements, for which our alumni have joined us from across the globe. Then the next segment is the lecture by K.N. Raghavan sir. And then we have the award ceremony, and finally a dialogue or a panel discussion with the present and the previous directors and chairman of ITISM. So to start with the centennial announcements, I would say that as ITISM steps into its second century, we have the privilege of hearing some special announcements from our alumni, the stalwarts who carry the legacy of this institute across the world. On this historic birthday, because 100 years is no small milestone, so on this historic birthday, your pledges add a new chapter to our collective journey. Your gestures register your unbroken bond with your alma mater. And what could be a better and beautiful moment for the Red Building when its children get groomed here, learn here, grow up here, take the armors of life skills and knowledge from here, and then come back to its alma mater in humble ways. So to start with, the first pledge is by Professor Raja V. Ramani and Geeta V. Ramani. And I have received their message, and I'm going to read out their message. They have instituted the ITISM Centennial Multidisciplinary Endowment. And the message reads, "It's a proud privilege to share a special announcement as IIT-ISM marks its centennial year. Professor Raja V. Ramani, distinguished alumnus of the 1962 batch of mining engineering, and Mrs. Geeta V. Ramani, an alumna of the University of Bombay with a master's in sociology, have graciously announced the establishment of a significant centennial endowment for ITISM Dhanbad, named the Raja V. and Geeta V. Ramani IIT ISM Centennial Multidisciplinary Endowment." So let's put our hands together for this endowment. The Ramanis have conveyed their intent to create this endowment with an initial contribution of rupees 3 crores, with the commitment to add further support in the future for advancing multidisciplinary education, research, and public engagement in earth sciences, mining, and natural resource engineering. The 4 key initiatives at ITSM to be funded initially from its earnings are, the first one, 3 chair professors to promote high-impact academic leadership, an institute lecture series on emerging trends and future needs in earth sciences and engineering. The third one is an annual multidisciplinary competitive research initiation grant focused on the sustainable development of natural resources. The fourth one is
honor scholarships for the undergrad students across all baccalaureate programs. This extraordinary gesture by Professor Ramani and Mrs. Ramani stands as a remarkable example of commitment to the alma mater and to the nation building through education, research, and sustainable resource development. IIT ISM Dhanbad extends its deepest gratitude to the Ramanis for this truly visionary and transformative contribution on our 100th Foundation Day. If we have our Pradeep Gangopadhyay sir here, I would request him to please come on to the stage and say a few words. Is Pradeep sir here? All right, so moving on to the next pledge, and this is pledged by Shivaji Das Gupta Family Centennial Chair Professorship. And the message reads, it's a proud privilege to share a very special announcement as IIT ISM marks its centennial year. Shri Shivaji Das Gupta, our distinguished alumnus of the 1971 batch of Applied Geology, has graciously announced the establishment of a significant centennial endowment for IIT ISM Dhanbad named as Shivaji Das Gupta Family Centennial Chair Professor in Exploration Geophysics. Let's put our hands together for it. Shri Shivaji Das Gupta has conveyed his intent to create this endowment with a contribution of rupees 59.5 lakhs. The said chair position is aimed at rewarding one faculty at any level, assistant, associate, or full professor of the Department of Applied Geophysics. So a big hand for this. For the professor who is engaged in high-impact applied research on using exploration, geophysics for exploration and resource evaluation of critical mineral supply chain for India. This extraordinary gesture by Shri Shivaji Das Gupta stands as a remarkable testament to his commitment to the alma mater and to nation building through education and research. IIT ISM Dhanbad extends its deepest gratitude to Shri Shivaji Das Gupta for this truly visionary and transformative contribution during our centennial year. The third pledge is from the Sen family, and the pledge reads, Sen Family Centennial Chair in Computational Geophysics Endowment. And I read the message. It's a proud privilege to share a very special announcement as IIT ISM celebrates its 100th birthday. Professor Mrinal Sen, our distinguished alumnus from the 1979 batch of Applied Geophysics, has graciously announced the establishment of a significant centennial endowment for IIT ISM Dhanbad, titled as the Sen Family Centennial Chair in Computational Geophysics Endowment. Let's put our hands together for this. Professor Sen family has created this endowment with a generous contribution of rupees 59.9 lakhs. The endowment is intended to advance high-impact research aimed at understanding the Earth's interior for societal benefit through the use of advanced numerical and mathematical models. The chair position is designed to recognize and support one faculty member of the Department of Applied Geophysics at the assistant, associate, or professor level who is actively engaged in applied research in this domain. This extraordinary gesture by Professor Sen stands as a remarkable testament to his commitment to the alma mater and to nation building through education and research. So once again, IIT-ISM extends its deepest gratitude to Professor Mrinal Sen and Mrs. Sen for this truly visionary and transformative contribution during our centennial year. Thank you, sir. The next pledge and the last pledge here, of course, I mean, there are many more which are going to roll in with time.
So from this platform, the fourth and the last one is Coleman Centenary Scholarships Endowment. This has been initiated by the 1986 batch, but it is open for all the batches, so other batches can also come and add into this. The message reads, it's a proud privilege to share a special announcement in IIT ISM Dhanbad Centennial Year. The alumni of the 1986 batch have visioned and taken the initiative to mobilize their batchmates and fellow alumni and have graciously announced the establishment of a centennial endowment for IIT ISM Dhanbad titled as Scholarman Centenary Scholarships. So I would urge the other batches also to join in this band. They have collectively created this endowment with a generous contribution from alumni from the batches of 1986 to 1989, amounting to over rupees 1.75 crores to begin with. The core objective of this endowment is to create a perpetual platform through which all alumni, past, present, and future, can participate, contribute, and give back to their alma mater. In its initial phase, these Coleman Centenary Scholarships will offer 4 Ruby Scholarships. So Ruby Scholarships for the girls, wonderful. For the first 4 programs offered by the Institute historically, BTech in Mining and Petroleum Engineering and MSc Tech in Applied Geology and Geophysics. In the next few years, this initial endowment will support 14 students over the years of study. The program's vision is to progressively increase the number of scholarships as the corpus grows through collective alumni participation. These scholarships will be awarded to needy and meritorious students of IIT ISM Dhanbad as per objective criteria. The Institute appreciates efforts of Shri Sanjeev Agarwal and Shri Sudarshanan AS, who have initiated this and will represent the alumni in managing the endowment with the Institute. This program stands as a powerful testament to the unwavering commitment by the alumni to their alma mater and to nation building through the promotion of education and opportunities for the underprivileged students. On this momentous occasion of our centennial year, IIT-ISM Dhanbad extends its deepest gratitude to all the contributing alumni for this truly visionary and transformative contribution. The Institute will take to this more alumni and looks forward to making this big so scholarships can be given across all the 13 major graduate programs and over 100 students can benefit perpetually. We invite our 15,000 plus, so here I make an appeal, we invite our 15,000 plus alumni community to participate in this unique endowment for Scholarman Centenary Scholarships. The initial contributors across batches are from 3 batches, 1986, 1987, and 1989. From the 1986 batch, we have Atul Tyagi, Manavendra Kumar, Faisal Hoda, Ramakant Tiwari, Sanjeev Agarwal, and Sudarshan AS. From the 1987 batch, we have Vivek Sharma. From the 1989 batch, we have KP Krishna Pillai and Nitin Khanna. So a huge round of applause for their efforts, and we all wish that more and more such names get added to our list of this. Sudarshan sir has joined us, so I request Sudarshan sir to say a few words, please. Very warm and hearty congratulations to the entire fraternity of IIT ISM Dhanbad. We all are so proud of this institution which has made us what we are, and we thought it is only fit that as the institute is celebrating its centenary, while each one of us can individually also support and contribute, but there is nothing like all of us coming together and collectively putting up endowment like this, which can remain forever and which can also become a contributory from, like,
you mentioned past, present, and future alumni so that it can keep growing and it can keep supporting. Our wish is this endowment grows rapidly and very fast, and all alumni take to it so that we are able to quickly get to be able to give 100 scholarships through this endowment. That's what we really would like it to shape to. We will certainly look forward to support from the Institute as well as all the alumni. I really thank all those who have come forward and participated with this thought. It's still, it's just germinating. I think it can grow into a very, very big initiative. I wish everybody in the Institute and all the alumni a bright future. Thank you very much for giving me this time to share my thoughts on this. Thank you so much, sir. We also have with us Sanjeev Agarwal, sir, from the 1986 batch. May I request, sir, to say a few words? Thank you very much. Firstly, let me just correct. So it is A.S. Sundaresan, Sundar as we called him on campus. And, Sundar very rightly said that whatever we have achieved in life is to a very large extent owed to the school. We studied there, we learned life skills, and all of those skills have become kind of part of us and have contributed to the successes, and the need of the schools and the need of the students is also significantly larger. And whatever we can do as ex-students, as alumni across the batches, it'll be something which will be really worthwhile and fruitful for us as individuals and of course for the school. My congratulations. I just second what Sundar said. It's a great achievement. The school is celebrating its 100th year, and I really wish the school, the students, the faculty, everyone the very best. Thank you very much. Wait, later. हाँ, दे दीजिए. Thank you so much, sir. And now may I invite Pradeep Gangopadhyay, sir, to say a few words. Please, sir. Hi. Good afternoon. I am Pradeep Gangopadhyay from 1970 batch Petroleum Engineering. I have few words to say. I just talked to Professor Raja V. Ramani from 1962 batch. He's a professor emeritus at the Penn State University in Pennsylvania. He said few words actually to say to Professor Rajiv Upadhyay, but he asked me actually to say few words on behalf of him. To begin with, as I said, Professor Ramani is from 1962 batch. He taught, he retired now, and he was the head of the department at Pennsylvania State University at University Park, Pennsylvania. I believe he has donated, first of all, he said to me that all he has achieved in his life is because of his education here at Indian School of Mines. That's number 1 point. Secondly, whatever he has done for whatever work he has done, he is immensely humbled by everything. By the way, I am one of the person worked with him very closely to bring all the people in one platform so that they can communicate, That is his second thing. And third thing is he has probably donated about 3 crores of rupees. I do not know, that's how it comes out in about this one. And then, and this is for environmental studies, for operations studies, operational research studies, and mining engineering and all that, That's all. And thank you very much for allowing me to say a few words. And
and I am really been flabbergasted by that offer. Thank you very much. You all have a good day. Thank you, Pradeep Da. We are flabbergasted by the presence of our alumni, particularly you. And Pradeep Da has been so active and so robust. Pradeep Da has been so active and so robust, even at this stage, and it's more so like it is through him we get to know what's happening in the alumni community. Thank you so much, sir. Our immense gratitude to all the batches of IIT ISM Dhanbad, all the alumni, for your thoughtfulness, for your kind gesture of support, and your love for your alma mater. Our dear alumni, thank you for carrying out the spirit of IIT ISM into the world with distinction. Your success, your support, and your unwavering connection to your alma mater continues to strengthen and uplift IIT ISM Dhanbad. We extend our heartfelt appreciation to every one of you. Your journeys, your contribution, and your enduring pride has enriched and shaped this Red Building's heritage and future. Thank you so much. Now moving on to the next segment of the day. We have with us our next speaker, Shri K.E.N. Raghavanji, who is going to talk on भारत का गौरवशाली इतिहास. आज के हमारे विशिष्ट अतिथि एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता जो पिछले 2 दशकों से अधिक समय से भारतीय कृषि को एक नई दिशा देने में निरंतर लगे हुए हैं. गाय आधारित जैविक खेती के विशेषज्ञ जिन्होंने वर्ष 2001 से सतत स्वदेशी और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों पर गहन कार्य किया है. इनका विशिष्ट योगदान है भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान दोनों का सुंदर समन्वय करते हुए खेती को एक समग्र और टिकाऊ स्वरूप देना भी. इनकी विचारधारा का मूल मंत्र है 1 एकड़ जमीन, 1 परिवार, 2 गाय बैल, वर्षा जल संचयन, व्यक्तिगत उत्पादन और सामूहिक विपणन. वर्टिकल खेती, मिश्रित फसलें और संस्थानीय संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग पर आधारित इनका मॉडल आज देश भर के किसानों के लिए प्रेरणा बना है. अब तक पूरे भारत के 85,000 से अधिक ग्रामीण किसानों को प्रशिक्षित कर इन्होंने न केवल कृषि कौशल को मजबूत किया है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा प्रदान की है. ऐसी दूरदर्शिता, समर्पण और समाज हित में निरंतर योगदान देने वाले व्यक्तित्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं. प्लीज सर. Let's put our hands together for K.N. Raghavan sir. May I invite a director to please grace the dais, please sir. श्री सुरभ्यै नमः. सर्वकामदुधे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी
पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमस्तुते लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता कृतं वहति यज्ञार्थं मम पापं व्यपोहतु। श्री सुरभ्यै नमः। परम श्रद्धेय निदेशक महोदय, यहाँ उपस्थित सभी प्राध्यापक, पूर्व छात्र जो बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, ऐसे जितने भी पूर्व छात्र यहाँ उपस्थित, अन्य छात्र जो अभी पढ़ रहे हैं ऐसे, और बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। भारत का गौरव जो है, जैसे अभी 100 वर्ष आपका गौरव यहाँ हो रहा है इस स्कूल ऑफ थॉट्स का, यानी, और इसमें से पढ़कर जो दुनिया भर में लोगों ने अचीव किया है, तो ऐसे भारत का भी एक गौरव है, और ये गौरव हजारों सालों का है। लेकिन हम कुछ वर्षों में इसको विस्मृत कर रहे हैं। तो वो समझना क्या है, तो हमारा गौरव को समझने के लिए जो इतिहास है, जैसा भी आपका तो 100 साल का इतिहास है, लेकिन भारत का इतिहास लाखों साल का है। तो अंग्रेजों ने जब भारत में आए तो उन्होंने उसको 3 पार्ट किया है। उन्होंने कहा कि एक प्राचीन इतिहास है जिसको एंसेंट इंडिया कहा है, और एक मीडियावेल कहा है, और एक उसको उन्होंने मॉडर्न पीरियड कहा है। ये जो एंसेंट इंडिया है, इसको उन्होंने कहा है कि 1206 से पहले, 12th सेंचुरी से पहले का जो इतिहास है उसको इंडो हिंदू इतिहास कहा है। लेकिन थोड़ा बाद में उसमें बुद्धिस्ट को जोड़ा, और आजकल जो बड़ा पढ़ाया जाता है बुद्धिस्ट यानी इंडो बुद्धिस्ट हिस्ट्री ऐसा कहते हैं। 1206 क्यों? 1206 में मोहम्मद बिन तुगलक ये आए थे, भारत में आक्रमण करके और सत्ता पर काबिज किया था, उसके कारण इसको वो कहा जाता है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब दिल्ली पर कब्जा किया और उस समय वहाँ थोड़े बहुत शासकों को हराया, तो इसलिए कहा जाता है कि उसके बाद मुगल पीरियड प्रारंभ हुआ, यानी जो मुस्लिम पीरियड है, इसको सामान्यतः जो मीडियावेल हिस्ट्री को मोहम्मडन पीरियड भी कहा जाता है, मुस्लिम इतिहास भी कहा जाता है। लेकिन 1761 में मराठाओं ने जो आक्रमण करके दिल्ली पर वापस से उनको हटाया और उसके बाद कब्जा कर लिया, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर थी, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो 1761 के बाद ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में जब भारत आया, उसके रूल में, कंपनी रूल्स में आया, तो उसको मॉडर्न इतिहास कहा जाने लगा। उसके बाद भारत में बहुत परिवर्तन हुए, और आज भी जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो मॉडर्न, इसको क्रिश्चियन हिस्ट्री कहा जाता था पहले, लेकिन बाद में इसको वेस्टर्न हिस्ट्री कहा जाने लगा, और बाद में फिर इसको वेस्टर्न को भी हटा करके मॉडर्न इतिहास कहा जाने लगा। यानी हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास और क्रिश्चियन इतिहास, ये हमको पढ़ाया जाता है। उसमें भी ज़्यादातर जो पढ़ाया जाता है वो मोहम्मडन पीरियड या क्रिश्चियन पीरियड के पढ़ाई होती है। 100% हम यही पढ़ रहे हैं। 1200 वर्ष पहले हमारे जो क्या था वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। 1200 पहले के जो हमारे जो शिक्षा पद्धति था, एजुकेशन सिस्टम था, साक्षर से साक्षात्कार की ओर था। यानी आप साक्षर हो गए ये बहुत महत्व का नहीं है, आपका साक्षात्कार हुआ है कि नहीं है। तो नॉलेज और विजडम ये 2 अलग चीज माना गया। हमारे यहाँ विजडम को, भारत की शिक्षा को विजडम कहा गया है, और जो वेस्टर्न कंट्री है वहाँ पर ही नॉलेज को उन्होंने एजुकेशन कहा है। आपने 4 वर्ष MBBS किया या 4 वर्ष यहाँ भी पढ़ाई किया, आपने IIT को इंजीनियरिंग कर लिया, आपको एग्जाम दे दिया, पास हो गया, तो आपको डिग्री दे दिया कि आप इंजीनियर हो गए। लेकिन वास्तव में जब तक आप जीवन में अनुभूत नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं उस विषय को, और जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ जब इम्प्लीमेंट करते समय जो अनुभूति होती है 5, 10, 20 वर्षों में, वो अनुभूत होने के बाद जो आपको उस विषय का जानकारी होती है, तब वो अप्लाइड जब करते हैं आप, तब आपको लगता है कि आपने शिक्षा पूर्ण किया। यानी अप्लाइड मैकेनिक्स में अचीवमेंट्स जब आप करते हैं, कोई नया चीज़ बनाते हैं, तो उस शिक्षा का पूर्णता होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ उसको कहा गया है कि व्यक्ति जो है वो विज्ञान को समझे, यानी बिना विज्ञान का इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं है। मनुष्य भी अपने आप में एक विज्ञान है, रसायन है, सारा चीज है। तो विज्ञान को कैसे सामान्य रूप से समझाया जाए, तो हमारा शिक्षा विज्ञान का है, यानी वेद को भी विज्ञान कहा है। लेकिन ये विज्ञान केवल विज्ञान नहीं है, अध्यात्म जुड़ना चाहिए। अध्यात्म क्यों जुड़ना चाहिए? क्योंकि एकमात्र मनुष्य है जो इस विषय को समझता है। बाकी तो विज्ञान में तो बुद्धि तो सभी जानवरों को है, अपना क्या खाना क्या नहीं खाना,
दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, वो भी जानते हैं। पेड़ पौधा को भी थोड़ा बहुत अपना बचाव का ज्ञान है, लेकिन दूसरों के हित के लिए जो काम करते हैं, यानी परहित, यानी जो परमार्थ करने की क्षमता रखता है। जैसा अभी बताया कि हम 3 करोड़ रुपया दे रहे हैं और किसी ने आपको, एल्युमिनियस ने डोनेट किया। ये जो सेवा का भाव, देने का भाव जो है, वो भारत में है, ये और कहीं विदेशों में बहुत ज़्यादा नहीं है। वहाँ चैरिटी है, वो फैशन है, लेकिन भारत में श्रद्धा है, विश्वास है और समर्पण है। तो श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और चैरिटी दोनों में अंतर है। इसको केवल भारत के लोग समझ सकते हैं, विदेश में इसको दान तो हम भी करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं वो। तो अध्यात्म जुड़ेगा तो विज्ञान नम्र होता है। और केवल उतना ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य को जो है फिर से उसकी मनुष्य गुण से ऊपर उठना है, तो देवे गुण आना है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो अर्थतंत्र कहा है, वो अर्थ केवल फिजिकल यूज के लिए नहीं है, वो बाह्य यूज के लिए भी है, यानी अन्य के लिए भी है, और केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्रकृति के लिए भी है। मैं यहाँ देखा प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक मना है। अभी मैं जहाँ ठहरा हूँ वहाँ पर उन्होंने कहा कि बोतल में पानी नहीं देंगे, हम प्लास्टिक का बोतल यूज नहीं करेंगे। ये अध्यात्म का विषय है और ये आर्थिक विषय भी है। आप पानी देंगे, लेकिन पानी आपको आरओ का ही देंगे, लेकिन प्लास्टिक बोतल में नहीं देंगे, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक हमने बैन किया है। ये जो अर्थ को अध्यात्म से जोड़ना, ये केवल भारत में होता है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कई चीज़ें जो सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं करना जो कहा है, कहने से नहीं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट आप कर रहे हैं। और इम्प्लीमेंट करते समय किसी को प्यासा नहीं रखना, पानी उसको देना, लेकिन पानी देने की जो पद्धति को बदलना, तो फिर दोनों काम होता है। तो इसलिए हमारा भारत का जो शिक्षा और जो ज्ञान है, उसको इस प्रकार से डेवलप किया गया। अभी आप कहेंगे कि भाई भारत में ज्ञान नहीं था क्या? अभी जो मेहरगढ़ का जो निकला है 78-79 में, जो जर्मन के साइंटिस्टों ने और वहाँ के जो जियोलॉजिस्ट लोगों ने जो खनन किया है सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे में, उसमें 9000 से लेकर 13000 साल पहले तक खेती होती थी भारत में। इरिगेशन सिस्टम था, और उस इरिगेशन सिस्टम में कैसे उन्होंने बीजों का संरक्षण किया। मिले हैं बीज, मिले हैं चावल, गेहूं, सब चीज़ों का बीज मिला है। बड़े बड़े कंटेनर्स में कैसे बीज डेवलप किया, कैसे खेती किया, बैल का कैसे उपयोग होता था, इसका वर्णन है। अभी इसका बहुत लंबा हम ये नहीं करेंगे। अभी सिनौली में मिला है, 4-5 साल पहले से लगातार अभी खुदाई चल रही है। 5-5 हजार साल पहले के जो रथ थे, जो सामान थे, वो सब मिले हैं। मैंने कुछ फोटोज दिया है। यानी 5000 साल पहले सिंगल एक आदमी चढ़ना और एक घोड़े पर चलना, 4 घोड़े पर 20 आदमी चलना, 7 आदमी चलना, ये सारी चीज़ें मिल रही है अभी। और अभी भी वो सारे एक्सकेवेशंस में आ रहे हैं, और इसको अभी प्रदर्शनी में भी लगाया है। अभी तो तमिलनाडु में निकला है, वो तो और भी पुराना है, 5-5 हजार साल पुराने के, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी 7000 साल, 8000 साल पहले के इंस्ट्रूमेंट सारे मिल रहे हैं। और मैंने इसमें कुछ ये भी दिया है। अभी जैसे आप तमिलनाडु में एक ब्रिज बना है, जब राजराज चोलन जब थे 1000 ईयर्स बैक, तो उन्होंने एक डैम बनाया था कावेरी नदी के ऊपर में। वो आज भी एग्जिस्ट करता है वो डैम, और उसके ऊपर में कार आज भी चल रहा है। और उसकी जो लंबाई चौड़ाई आप देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। यानी कि उसको बनने में बहुत वर्ष लगे, लेकिन जो 1000 साल पहले का बना हुआ डैम आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, और आज भी उसमें काम हो रहे हैं, उसके ऊपर में गाड़ियाँ चल रही है। वहाँ एक तमिलनाडु में एक बृहदाश्वर मंदिर है चिदम्बरम में, उसके ऊपर की जो गुंबद में सिंगल स्टोन है, जो 117 फीट ऊंचाई पर है, उसका वजन 80 टन है। और कहीं पर कोई जोड़ नहीं है, कहीं फेरो सीमेंट का उपयोग नहीं किया है, स्टोन्स में कर्विंग करके उसको, और कोई बेस भी नहीं बनाया उसका। तो आश्चर्य है कि गूगल में आप देखेंगे तो यूट्यूब में और डिस्कवरी चैनल्स पर उसमें बहुत काम हुआ है। 70-80 टन का एक सिंगल स्टोन को कैसे उन्होंने 1700-1600, यानी उस समय 1000 साल पहले लेके गए होंगे। और उसके जो गर्भगृह है, उसका जो शिवलिंग का जो ये है, उसका ऊपर का जो टॉप है, उसका वाइब्रेशन, यानी उसका जो प्रेशर होता है, आपको पता है 80 टन का अगर कोई वजन होता है तो उसके नीचे का जो ग्रेविटेशनल में कितना फोर्स होगा। वहाँ पर ही जो शिवलिंग रखा है, उस शिवलिंग का जो ऊपर का जो एनर्जी है, वहाँ आप जाएंगे गर्भगृह में, वो जो एनर्जी है भयंकर एनर्जी है, यानी जो वाइब्रेशन है उसका। इसलिए वहाँ जो लोग पूजा करते हैं उनको लाभ होता है। तो इसका विषय कभी मौका होगा तो हम चर्चा करेंगे। अभी उसी में लगभग 1000 साल पहले ही है, और एक सिंगल स्टोन से बना है 65 फीट का बाहुबली का। और सोचिए बाहुबली का 65 फीट का इतना ऊंचा मूर्ति है, लेकिन बड़ा उसकी जो हंसी है, वो जो कर्विंग किया स्टोन में, वो दूर से आज भी दिखता है।
1000 साल पहले के जो कर्विंग किया हुआ स्टोन में, जब वो माने मंद हंसी कर रहे हैं, उनका जो स्माइल है वो आज भी विजिबल है। यानी क्या स्टोन किया होगा। जब राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो जब उसका जो चित्र पहले देखा गया तो लोग जो देखने के बाद जो लोगों को लगा उसको आंख को देखने के बाद, आप में से भी कुछ लोग देखे होंगे लाइव टेलीकास्ट में, तो लाइव टेलीकास्ट देख रहा था तो एक जीवंतता जो उसमें दिख रही थी, तो मूर्ति में था तो पत्थर का, और जिसने बनाया वो खुद कह रहा है कि भाई मैं तो जो बनाया था वो ये स्टोन नहीं है, ये वो मूर्ति नहीं है। तो मूर्ति में आया कैसे? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो एक वाइब्रेशन होता है वहां पर, एक यंत्र मंत्र तंत्र से जो वातावरण क्रिएट होता है उसमें वो स्टोन में वो वाइब्रेशंस आता है, तो वो दिखता है उसमें। तो ये बनाया है, ये भी 1000 साल पहले के बने हुए हैं। तो जो लोग इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, डैम बनाते हैं, बड़े स्टोन्स को काट करके और खड़ा कर देते हैं, उसका आज भी एग्जिस्टेंस है, उनको घर बनाना नहीं मालूम है। मैं आज एग्जीबिशन में देखा बहुत से घर बने हुए थे, बिल्डिंग्स बने हुए थे। एक एग्जीबिशन में लगा, मैंने पूछा नहीं भाई क्या चीज़ है, क्या कर रहे हो, कैसे बना रहे हो, लेकिन जो अर्थक्वेक में 7 सिस्मिक जोन में अगर मान लीजिए 7 आता है, रिएक्टर स्केल पर 8 आता है, अभी 10 में बना है राम मंदिर का, तो क्या लोगों को उस समय नहीं मालूम था? वो मंदिर जो 1000 साल पहले बना है, और तमिलनाडु में इतने ज़्यादा भूकंप आए हैं, अब यहाँ भी बहुत से भूकंप आए हैं, मंदिर क्यों नहीं टूटे? तो ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो ये भारत में जो हजारों वर्षों से जो चीज़ें आज एग्जिस्टिंग है, उसके बारे में मैं जो भारत का इतिहास, आपको गौरवशाली इतिहास यानी जो ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ भारत बताने वाला हूँ, उसमें कोई कल्पना से नहीं बोल रहा हूँ। किताबें लिखी गई है। मैगस्थनीस नाम का एक यूनानी जो था, जो पत्रकार था, चित्रकार था और पढ़ा लिखा स्कॉलर था, वो जब भारत में आया, जब हेलेन का शादी जब चंद्रगुप्त से हुआ, तो हेलेन के साथ में दुभाषिया के रूप में वो आया और 14 वर्ष पूरे भारत में घूमा। घूमने के बाद उसने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम इंडिका है। तो ऐसे मैगस्थनीस ने एक किताब लिखी है, और भारत कैसा था 2300 ईयर्स बैक, और बिफोर क्राइस्ट 334 ईयर्स में कैसा था। ऐसे ही फाहियान नाम का एक चीनी यात्री भारत में आया था, वो भी वहाँ का शंकराचार्य जी, यानी 6 वर्ष की उम्र में मॉन्क हो गया था। उस समय जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन वहाँ चीन में था वो कंप्लीट कर चुका था। 9 साल में वो मॉन्क बन गया, सन्यासी बन गया, और 14 वर्ष की उम्र में भारत में आ गया, और भारत में वो 2 वर्ष में उसने 2 मास्टर डिग्री किया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। उसके बाद फाहियान आया था, उसके बाद हुयानसांग आया, ईजिंग आया। तो ऐसे कुछ चाइनीज़ जो बड़े हाई स्कॉलर थे, उन्होंने भारत के बारे में किताबें लिखी है चीनी में और पाली में, तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में और हिंदी में है। ऐसे मैगस्थनीज यूनान से जो लोग आए थे उन्होंने किताब लिखी है। यूरोप से जो लोग भारत में आए थे उन्होंने भारत के बारे में लिखा है। ऐसे कुछ लोगों का मैं किताब जो उन्होंने भारत में देखा और सुना और जो लिखा, जो किताब एग्जिस्टेंस है, मार्केट में उपलब्ध है, उसमें कुछ चर्चा आपको करूँगा। और जब मैगस्थनीज किताब लिख रहा था भारत कैसा है, तो उस समय भारत में राजा को राज्य कैसे करना है, राजा को राज्य में कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो बता रहे थे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उस समय किताबें लिखी गई कौटिल्य का अर्थशास्त्र की। तो कौटिल्य बता रहा है कि राज्य कैसे होना चाहिए, समृद्धि कैसे होनी चाहिए, आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। राजा को इंप्लीमेंट करवाया उन्होंने, खुद चाणक्य उसको इंप्लीमेंट कराया। वो तो प्रधानमंत्री थे और वो राजा थे जब चंद्रगुप्त, तो महामात्य थे ये चाणक्य। और मैगस्थनीज उसी समय भारत कैसा है वो लिख रहा है, मैं उसकी चर्चा अभी आपको करूंगा। तो ऐसे कुछ नाम मैंने यहाँ दिए हैं, तो ये आप नाम देखते हैं, तो ये भारतीय जो भारतीय लोगों का जो, अच्छा इसे टीवी में आएगा नहीं, ये तो टीवी का ये है, तो पॉइंटर आता नहीं है इसमें। तो एक तरफ में विदेशियों ने जो किताबें लिखी है और एक तरफ में हमारे भारतीयों ने जो किताबें लिखी है। कौटिल्य अर्थशास्त्र आज भी उपलब्ध है, आप दोनों किताब पढ़ सकते हैं। मैगस्थनीज ने क्या बता रहा है और कौटिल्य क्या बता रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे था उस समय। तो मैगस्थनीज जो आया था भारत में, तो मैगस्थनीज ने 2305 साल उसने किताब लिखी है उसमें। और उस समय जो सामाजिक भारत का कैसा था, ताना बाना कैसे था, उसमें उसने बताया कि भारत में एक भी गुलाम नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि भारत में मनुष्यों का खरीद बिक्री नहीं होता था, जबकि वो उसके लिए आश्चर्य था ये विषय। और उसने तो ये भी लिखा है कि यहाँ तो भेड़ बकरी पशुओं का भी गुलामी नहीं होता है। लोग सुबह सुबह अपना गाय को खोल देते हैं तो अपने आप जंगल जाती है, शाम को लौट के आ जाती है। यानी पूरे गांव का गाय इकट्ठा होता है, जंगल जाता है, एक साथ गांव में आता है, फिर अपने अपने घर में गाय अपने आप चली जाती है। या तो गायों का जो है लेन देन होता है, बिक्री नहीं होता है।
ये उसका वर्णन है उसमें। भेड़ बकरी के बारे में भी उन्होंने ये कहा है। और उन्होंने जो किताबें में जो वर्णन है उसके अलग अलग ब्रांचेस में, उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसा था, एजुकेशन कैसा था, हेल्थ कैसा था, और राजा का क्या क्या ये रहा है, उसमें लिखा। मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स में उसमें बता रहा हूँ क्योंकि समय का ये है। तो उसमें उन्होंने कहा कि भारत में लोग कपड़े पहनते हैं, और दूसरा बात बताया कि भारत में सभी कपड़े पहनते हैं, और मजेदार बात बताया कि कपड़े पेड़ में उगते हैं। इट ब्लॉसम्स इन प्लांट्स एंड ट्रीज। अब सोचिए कि भारत में कपड़े पेड़ में उगते हैं, भारत में लोग कपड़े पहनते हैं, सभी कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब यूनान में कपड़े नहीं थे उस समय। उस समय का आप ड्रेस देखिए, उस समय का जो म्यूजियम में देखेंगे, चमड़े के होते थे, पट्टियां होती थी, उसको सिला करके केवल राजा मार, क्योंकि इतने चमड़े होते नहीं थे, तो बड़े बड़े लोग ही चमड़े पहनते थे, बाकी लोग क्या करते होंगे फिर। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये मेगास्थनीज ने लिखा है कि सभी कपड़े पहनते हैं भारत में। तो पूरे दुनिया में कपड़ा भारत से जाता था, यानी उस समय का व्यापार का जो है वो बहुत लंबा विषय है। उन्होंने कहा कि समुद्र में मैंने पेड़ देखे हैं, और उसमें अभी आप रामेश्वरम में जाएंगे, समुद्र में कुआं है मीठा पानी का। आप में से कोई गए हैं क्या, स्नान किए हैं क्या? कभी जाइएगा तो वहां पर ही 24 कुंड, 25 कुंड, 36 कुंड है। कहते हैं 108 कुंड है, राम ने तीर मारा था, उसमें एक समुद्र है। माने जो आप ब्रिज के इधर में देखेंगे तो एक समुद्र का कुंड है, पानी है, मीठा पानी निकलता, समुद्र में है। आप समुद्र के अंदर में है वो, लेकिन मीठा पानी निकलता है उसमें। और वहाँ रामेश्वरम जाएंगे तो आपको लोग दिखाएंगे भी, आप निकाल के पी भी सकते हैं उस पानी को। समुद्र के अंदर में, समुद्र में पानी है, नीचे तरफ चारों तरफ समुद्र है, बीच में आप जाएंगे, गहरा नहीं है, एक 8-10 फीट ही पानी है, लेकिन उसमें कुआं है। तो उन्होंने कहा कि समुद्र में मैंने पेड़ देखे हैं, तो कुछ तो भी कारण रहा होगा। तो अभी मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि भारत में प्रचुर मात्रा में सोना चांदी, आज भी भारत में महिलाओं के पास बिना सोना का, बिना चांदी का शादी नहीं होता है। अभी मैं एक कार्यक्रम में शादी में गया था, तो उन्होंने बताया कि 20 तोला सोना दिया है बेटी के विवाह में। तो मैंने कहा 20 तोला मतलब क्या है? तो 1 ग्राम, मैंने अभी तो सोना तो 10 ग्राम सोने का 1-1.25 लाख रुपया कुछ चल रहा है। तो मैंने कहा इतना महंगा आपने दे दिया, 20-25 लाख तो सोने के हो गए। बोले नहीं, ये पहले से खरीद कर रखा हुआ था हमारे पास, ट्रेडिशनली आ रहा है। यानी जब वो खरीदे होंगे तो कम रहा होगा, 20-25 हज़ार रुपया रहा होगा। यानी मेगास्थनीज कह रहा है कि भारत में धातुएं, सोना, चांदी, लोहा, जो हथियार के बारे में वर्णन किया है, जो आपके मेटलॉजी का डिपार्टमेंट का विषय है, सारे माइन से निकले हुए हैं। सोने के इतने अद्भुत अद्भुत गहने थे सोने के, कि अगर वो खाने में रख दिया जाए तो सोना का रंग बदल जाता था, तो जहर है कि नहीं पता चलता था। जो प्लेट बनाते थे, मेगास्थनीज ने लिखा है इसके बारे में कि राजा को खाने के पहले एक प्लेट में उसका हिसाब रखा जाता था। अगर प्लेट का रंग बदल गया तो खाना नहीं खिलाते थे, उसमें जहर होने से वो प्लेट का रंग बदलता था। तो मेटलॉजी का ही विषय है, वो कैसे बनाए होंगे, किस पत्थर से कैसे किए होंगे उसको। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें उन्होंने उसमें वर्णन किया है। और उन्होंने कहा कि भारत में सालों भर, मैंने किसी भी राजा को, चाणक्य का जो आप कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो चाणक्य सूत्र में एक आता है, उसमें यह है कि राजा ने पूछा चंद्रगुप्त ने कि भाई कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें तो आपने बोल दिया, छोटी छोटी बातें बताइए। तो उन्होंने कहा कि भाई 3 चीज़ राजा को हमेशा करना चाहिए। सबसे पहला भोजन, आपकी प्रजा जितनी है उसको 2 टाइम सालों भर, जीवन भर भोजन मिले, आप उसके भोजन की पहले व्यवस्था करो। फिर दूसरा, अपने राज्य की सुरक्षा करो, रक्षा करो, सेना आपकी मजबूत होनी चाहिए। और आपकी हमेशा, क्योंकि जब आपके पास समृद्धि रहेगी तो आक्रमण होंगे। भारत में जितने भी लोग आए संपत्ति लूटने के लिए आए, और आज भी जो चल रहा है डीप स्टेट और जो कई बातें हो रही है, वो क्यों हो रही है? पैसे के लिए हो रही है, माइंस के लिए हो रही है, रेयर अर्थ मेटल्स के लिए हो रही है। अभी दुनिया में ये सब चल रहा है। तो पैसे लूट हमेशा होंगे, जिसके पास पैसा होगा उसको लूटने के लिए लोग आएंगे। तो और भारत हमेशा पैसा समृद्धशाली रहा है, हजारों सालों से रहा है। तो उन्होंने कहा कि सेना को आप मजबूत करो। तीसरा उन्होंने पूछा, और बोला बस 3 चीज करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। तीसरा क्या है? प्रजा को संतुष्ट रखो, नाराज मत होने दो उसको। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि अच्छा महाराज ये बताइए कि गुरुजी, कि अगर इसमें से कोई एक छोड़ना पड़े, तो उन्होंने कहा कि अन्न को छोड़ दो, क्योंकि जब संकट होता है तो सबसे पहले अन्न छोड़ते लोग प्राण बचाते हैं। तो सेना और राजा जो है, प्रजा को समझाओ कि भाई अभी संकट का काल है। तो कोरोना में हमारे साथ वैसे ही हुआ, संकट बताया गया कि भाई ताली बजाओ, ये बजाओ, तो किसी तरह से और संभाल लिया कोरोना को, दवा बनी, फिर ठीक हो गए हम। उन्होंने कहा कि दूसरा चीज भी छोड़ना पड़े तो सेना को छोड़ो। लेकिन तीसरा, यानी जनता का जो
समझदारी है, जनता को जो सुख दुख है उसको कभी मत छोड़ना। यानी प्रजा के हित में ही राजा का हित है। आपका सुख छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन प्रजा का हित को नहीं छोड़ना। तो ये तो 3 चीज बताया उन्होंने, सेना और खाना। भारत में अन्न की कमी कभी नहीं रही, सारे लोगों ने किताबें लिखी है, सबने ये बताया कि भारत में अन्न की कमी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 2 फसल होते थे, सालों भर खेती होती थी, लोग सालों भर खेती में लगे रहते थे, अनाज फल सब्जियां होती थी। आज भी दुनिया में, कल का ही स्टेटमेंट एक आया है कि ये फालतू राइस हमारे यहाँ डंप मत करो, स्टेटमेंट आया है। तो राइस भाई आपको नहीं चाहिए तो दुनिया में और भी लोगों को राइस चाहिए, उसको भेजेंगे हम। और प्रतिबंध तो लग ही गया भारत में अभी, लेकिन अन्न के बिना दुनिया में नहीं रह सकते हैं। अभी यूक्रेन को समस्या आ रही है, गेहूं नहीं बेच पा रहा है, गेहूं नहीं हो रहा वहां पर, लेकिन भारत के गेहूं दुनिया में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, 80-90 कंट्री में गेहूं जा रहे हैं। तो अन्न के बिना नहीं रह सकते, बिना मोबाइल के रह सकते, बिना मोटरसाइकिल के रह सकते, बिना एसी के रह सकते हैं, लेकिन अन्न के बिना नहीं रह सकते हैं। तो कभी मौका होगा मैं उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। इसलिए मेरा एक्सपर्टाइज ही पूरा उसी में है कि अन्न कैसे उगाया जाए और अन्न में कैसे। मैगस्थनीज ने एक बात और लिखी कि इतनी बड़ी सेना है और इतने लोग हैं कि भारत में, यानी मैगस्थनीज कह रहा है कि चोरी नहीं होती थी, डकैती नहीं होती थी, छोटी मोटी घटनाएं होती थी वो गांव लेवल में निबट जाता था, बड़ी घटना होने से राजा के पास आता था। नहीं तो चोरी कभी नहीं देखा गया, घरों में ताले नहीं लगते थे, और सामान रखवाली करने के लिए गांव में कोई रखवाली करने वाला व्यक्ति, चौकीदार, आजकल जो सिक्योरिटी जगह जगह पर लगाते हैं, कोई नहीं था वहां पर, खुले छोड़ते थे लोग। आज भी ये चीज़ है। मैं आज भी वनवासी गांव में जाता हूँ, ट्राइबल एरिया में जाता हूँ। अभी मैं कर्नाटक में गया था, दांडेली में, अभी कुछ महीने पहले की बात है। एक कार्यकर्ता के घर में थे, फिर हम लोग निकले तो गांव में दूसरा जगह जाना था, तो सब निकल गया। मैंने कहा सब निकल गया, दरवाजा बंद नहीं किया? बोला नहीं, कोई आएगा नहीं इसमें। तो मैंने कहा नहीं, कुछ तो दरवाजा तो कुछ तो लगाओ। तो उसने 3 लकड़ी लगा दी, 3 बड़े बड़े बांस था, उसने लगा दिया। तो मैंने कहा भाई इससे क्या होगा? बोला अगर कोई कुत्ता जानवर होगा तो देखेगा, लगा तो नहीं जाएगा। बोला कुत्ता तो आराम से जा सकता है इसमें, वो तो 2 फीट में लगाया है तो कुत्ते तो आराम से जा सकते। बोला नहीं, वो लकड़ी देखने के बाद कुत्ता भी नहीं जाएगा, लकड़ी देखने के बाद गाय भी अंदर नहीं जाएगी। ये आज भी है, आज भी भारत के बहुत से गांवों में नहीं लगते ताले। तो इसका मतलब यूनान में ताला लगता था। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने जो कही है कि चंद्रगुप्त के शासन में, चंद्रगुप्त के पास 6000 सैनिक थे, 6 लाख सैनिक थे। आप सोचिए किसी राजा के पास 6 लाख, अभी तो भारत सरकार के पास उतना नहीं है, सब मिला के पैरामिलिट्री सब मिला के 12 लाख हो रहे हैं। 30,000 इसके पास में मैंने जो वॉर हॉर्सेस थे, माउंटेन पुलिस जो था, माउंटेन जो ये है, वो 6000 थे, और 9000 लड़ाकू हाथी थे। हाथी तो और भी ज्यादा थे डेकोरेशन में, मंदिर में, इधर उधर, लेकिन राजा के युद्ध के जो हाथी थे, जो बहुत लंबे लंबे होते हैं, और उसको ड्रम के हिसाब से 100-100 लीटर शराब पिलाया जाए और तब वो युद्ध के लिए जाता है, ऐसे हाथियों, ट्रेंड हाथियां थी। और मजेदार बात है, मैगस्थनीज के साथ जब ये हुआ, सेल्यूकस के साथ में जब संधि हुआ चाणक्य ने जब संधि कराया चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का, तो उसमें 3 बातें हुई थी। एक तो बात है कि भाई आपका जो आधा राज्य, यूनान तक का राज्य, यानी आज जो बेबीलोन है, वहां तक भारत को दे दिया। यानी इराक भारत में था, इराक तक का क्षेत्र उसने दान किया था भारत को, आधा भूमि उसने भारत को दे दिया। और इराक से उधर आज का जो बगदाद है, उससे उस पार, वहां तक उनका यूनान का जमीन था। तो सेल्यूकस ने वो जमीन दिया, नंबर 1। नंबर 2, अपनी बेटी जो हेलन थी उसको दे दिया, भाई ठीक है इसके साथ विवाह करो। और अपनी संपत्ति आधा दे दिया। उसके पास जो खजाना था सेल्यूकस के पास, यानी यूनान पे सिकंदर के मरने के बाद सेल्यूकस राजा बना, तो उसने अपने आधा दे दिया। और उसके बाद उसने कमेंट्स किया, और बदले में जो दान देते हैं अपने ससुर को, अपने पत्नी के जो लड़के की तरफ से कुछ गिफ्ट किया जाता है, 500 उसने लड़ाकू हाथी दिए सेल्यूकस को, 500 लड़ाकू हाथी दिए। और सेल्यूकस क्या बोल रहा है कि राजा बेवकूफ है, मैंने जो दिया है उससे उसने 10 टाइम्स ज्यादा दे दिया मुझे। यानी 500 हाथी जो है, लड़ाकू हाथी, वो इतना पावरफुल उन दिनों माना जाता था कि हाथी पर बैठा हुआ राजा कभी हार नहीं सकता है। एक हाथी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, 500 हाथी दे दिया, जबकि उस समय उसके पास 9000 लड़ाकू हाथी थे। अब बात समझ रहे हैं कि सेल्यूकस ये कह रहा है आधा राज्य दे दिया, आधा खजाना दे दिया, अपने बेटे भी दे दी, और उसके बाद कह रहा है कि भाई ये तो बेवकूफ है, हमको 500 हाथी दे दिया, हम तो बहुत थोड़ा सा दिया और ये हमको बदले में इतना दे दिया। यानी हाथी पर बैठ के मैं कहीं भी जाऊंगा दुनिया जीत लूंगा, ये उसका था।
तो भारत के लोगों को पता है हाथी बढ़िया ट्रेंड भी हो, लेकिन उस पर बैठने वाला जो योद्धा है अगर वो ट्रेंड नहीं होगा तो हाथी नहीं चलता है। ये सेल्यूकस को शायद नहीं मालूम होगा। एक और घटना बताता हूँ, सेल्यूकस को भ्रम कैसे कैसे होता है। तो एक दिन चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त से कि मैं 1 महीने के लिए अज्ञातवास में जा रहा हूँ और तुम बिल्कुल प्रयास मत करना मेरे से मिलने का। अगर तुमको लगता है मुझसे मिलना है तो तुम अपने दरबार में बता देना, मेरे जासूस हैं, मुझे खबर कर देंगे। तो सेल्यूकस आया मिलने के लिए, बेटी को देखने के लिए आया था कि मेरी बेटी कैसी रहती है यहाँ पर। तो बहुत सालों में उसके बच्चे हो गए थे, सेल्यूकस के बेटे हो गए थे, यानी चंद्रगुप्त और हेलन का। तो हेलन को देखने के लिए वो आए। आने के बाद जब वो वापस जाना था उनको, तो उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा कि भाई चाणक्य नहीं दिख रहे, चाणक्य को मिलना है, कहाँ है वो चाणक्य। तो उन्होंने कहा कि भाई गुरुजी ने तो कहा कि 1 महीने का अज्ञातवास में है, तो करीब 20-22 दिन हो गया है, अब 7-8 दिन के बाद वो आएंगे। अभी वो 7-8 दिन तक, और हमको मना किया मिलने के लिए। बोले नहीं नहीं, मैं तो मिलना चाहता हूँ, उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ। तो कुछ जब वो मैंने कहा कि नहीं नहीं मिल सकते, मैं तो बात नहीं कर सकता, मुझे मना कर दिया है। तो लेकिन दूसरा दिन सेल्यूकस को खबर आया कि आप चलो, जंगल में बैठे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं चाणक्य। तो सेल्यूकस को लेके गए। तो उस समय जो पाटलिपुत्र से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक जंगल, गया की तरफ जब आते हैं, राजगीर की तरफ आते हैं, तो वहाँ एक जंगल में थे वो, तो बैठे थे और उनकी सब टीम थी वहाँ पर। तो सेल्यूकस आया तो बोला मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ, मैं तो ये देखने के लिए आया था मेरे बेटी को ठीक से रखा है कि नहीं रखा है, और आपको बता दूं कि मैं सेना लेके आया हूँ, मुझे अगर मेरी बेटी का जरा भी गड़बड़ होता तो मैं आक्रमण करता। तो चाणक्य हंसे। तो उन्होंने बोला क्यों हंस रहे हैं। बोले जब तुमने तय किया था यूनान में बैठकर कि मुझे भारत में जाना है, तब से तुम मेरे राउंड अप में आ रहे हो, मेरी इच्छा से तुम यहाँ मिलने मुझे आए हो, मैंने तुमको राउंड अप किया हो, मेरे सेना तुम्हारी सेना को घिरी हुई है और यूनान से मेरी सेना तुमको घिरते हुए आई है। तुम अगर जहां गड़बड़ करते तुम वहीं मारे जाते, और अभी भी तुम यहाँ पर जो आए हो ना, तो 3 लहर में तुम घिरे हुए हो, तुम्हारी पूरी सेना की सारी सिस्टम मेरे हाथ में है। तो मैं यहाँ जो 1 महीना बैठा हूँ इसलिए बैठा हूँ, जब तुम वहाँ से चले थे तब से मेरी पूरी सेना मेरी घिर के आई है, तुम जिंदा बच के यहाँ से जाओगे मैं चाहूँगा तब। तो घबरा गया वो, और उसने कहा तुम देखना चाहते हो, और उसकी पूरी सेना अरेस्ट हो गई, पूरी सेना अरेस्ट हो गई, सारे आर्म्स रखवा लिए गए, घुटने पर बैठा दिए हाथ बांध कर। बोला देख तुम्हारी सेना 2000-3000 को तुम लेके आए हो, हमारे पास 6 लाख लोग हैं। तो सेल्यूकस ने माफी मांगा और कहा कि ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो 1 महीना वो उस प्रकार के थे। यानी जो मैगस्थनीज लिख रहा है भारत के बारे में कि भारत कैसा था, तो भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, भारत का इकोनॉमिक सिस्टम और भारत में प्रजा और राजा का संबंध, ये तीनों बहुत मजबूत थे। तो एक बिंदु उसका है। फाहियान दूसरा घटना है। फाहियान जो है ये 6 वर्ष की उम्र में, उस समय जो बुद्धिज्म के जितने भी किताबें थी चीन में वो पढ़ चुका था, और उसको मेमोरी थी, उसकी फोटो मेमोरी थी। जैसे हमारे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी का जो फोटो मेमोरी है, एक बार देख लिया जीवन भर याद हो गया, ऐसे फोटो मेमोरी थी उसकी। तो उसने कहा कि भाई ये तो त्रिपिटिका है, मुझे इसके बाद समझना है। तो एक बुद्ध के मंदिर में गए, उनको बताया त्रिपिटिका ये है। उसने कहा कि भाई इसको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन करो। बोला मैं नहीं जानता हूँ, आप उस बौद्ध विहार में जाओ। एक और बड़ा बौद्ध विहार में गया, उसने कुछ और भी एक्सप्लेन कर दिया। उसने कहा कि भाई त्रिपिटिका के बारे में तो इसने ऐसा कहा, और आप आगम के बारे में ऐसा कह रहे हो। बोला मैंने जो आगम पढ़ा है त्रिपिटिका ये है, लेकिन तुमको जाना तो तीसरे में जाओ। तीसरे ने तीसरा बात बता दिया, त्रिपिटिका एक है और 3 एक्सप्लेनेशन है। उसने कहा कि वैसे कैसे होगा। तो उन्होंने कहा भारत में जाओ, और भारत में जा रहे हो तो उन्होंने कहा ठीक है मैं भारत जाऊंगा। तो जब भारत मालूम पड़ा कि भारत जा रहा है, तो कई भंती लोग उसको मिलने आए। उन्होंने कहा कि भारत जा रहे हो, पढ़ाई तो करना, वो तो केवल आपको साक्षर होगा, लेकिन भारत को समझना तो भारत घूमना, भारत में लोगों को मिलना देखना और भारत को जानना, तो तुम्हारा शिक्षा पूर्ण होगा। यानी साक्षर से साक्षात्कार, साक्षात्कार के लिए लोगों से मिलना। तो कहा कि तब तुम्हारा तो पढ़ाई तो उसने 2 साल में कर लिया। और उसमें जो वो वहाँ पर गया था, वो जिसमें वो वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में शीलभद्र थे उस समय वहाँ पर। तो उन्होंने एक किताब लिखी है। 12 वर्ष भारत में रहा, बाद में समुद्र से आया तो था इधर बामियान से होते हुए, और गया समुद्र से होकर के श्रीलंका होकर के। तो उन्हें किताब लिखी है इंडस नाम की किताब लिखी है। और मज़ेदार बात है कि उसमें उन्होंने जो बातें बताई, जैसे भारत के घरों में ताले नहीं लगते हैं, या भारत में दूध दही की नदियाँ बहती है, आप भी सुने होंगे। ये सबसे पहले वर्णन किया है फाहियान ने।
अपने इंडस नाम की किताब में। तो दूध दही की नदियाँ कैसे बहती है, तो घी बनाने के बाद जो छाछ बच जाता है, मट्ठा, जिसको बटर मिल्क कहा जाता है, तो लोगों के सबके घर में गाय थी, सैकड़ों गायें लोगों के पास थे, लोग खूब घी बनाते थे। लेकिन वो जो छाछ बच जाता था उसको लोग खेतों में डालते थे, और वो नियम होता था कि भाई इस दिन में सभी खेतों में एक साथ डालना है। तो लोगों के पास 400-500 लीटर जो रहा होगा, क्योंकि अगर 100 किलो दही है तो 500 लीटर पानी डालते हैं उसमें, 5 गुना 4 गुना पानी डालते हैं, तब घी निकलता है। तो 100 किलो दही का जो है 500 किलो पानी मिला तो 600 किलो हो गया। तो 600 किलो क्या करें कि सबके घर में है, तो वो खेत में डालते थे, खेत की फसल बहुत अच्छी होती थी। तो कभी देखा होगा कि बचा हुआ दूध है लोग डाल रहे हैं, बचा हुआ दही है डाल रहे हैं, हजारों लीटर डाल रहे हैं लोग, और एक साथ पूरे गांव में डाल रहे हैं, तो देखा होगा उसने। तो उसने लिखा है, आज भी उड़ीसा में आप जाएंगे ना, तो पुराने जो कहावत है उड़ीसा में, सर भी तो उड़ीसा के ही हैं, तो वहाँ जो घी बनाने के बाद जो छाछ होता है वो यूज़ नहीं किया जाता है। आज भी ट्राइबल एरिया में आप जाएंगे ना, घी बनाने के बाद उसको खेत में डालते हैं उसको, वो कहते हैं इसमें मक्खन निकल गया, अभी खेत की हो गई। जैसे धान काट लेने के बाद जो नीचे का जो पुआल होता है वो खेत का हो जाता है, मैंने जो 6 इंच 4 इंच का रहता है पुआल, वो खेत का अनाज है, क्योंकि जो नेक्स्ट फसल होगा उसमें जो माइक्रोब्स है उसके लिए उसको छोड़ना है। तो ऐसे उन्होंने उसमें कहा है। फिर उन्होंने कहा यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, क्योंकि बौद्ध विहारों में अस्पताल थी, उनके यहाँ चाइना में अस्पताल थी, चाइना के घरों में ताले लगते थे, चाइना के घर में दूध दही बड़ा महंगा होता था, मिलता नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई भारत के जो पूरे गांव में मैं घूम रहा हूं कहीं भी अस्पताल नहीं मिला है, लेकिन वैद्य थे, गांव गांव में वैद्य थे। तो हमारा जो सिस्टम है और वेस्टर्न सिस्टम में इसको इस तरह समझिए, अस्पताल कब होता है, जब आदमी बीमार पड़ता है तब होता है, बीमार पड़ने के बाद इलाज के लिए होता है, क्योर करने के लिए होता है, डिसीज क्योर करने के लिए होता है। लेकिन भारत में जो वैद्य थे, भारत की जो पद्धति थी, बीमार ही ना पड़े व्यक्ति, प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्यूर जो अंग्रेजी में कहा जाता है, भारत में प्रिवेंटिव था, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ ही रखना, बीमारी नहीं पड़ने देना। तो गांव गांव में वैद्य होते थे, आहार नियमन होता था, दिनचर्या थी, ऋतुचर्या थी, कौन से मौसम में क्या खाएंगे और किस दिन भर में कैसा उसका लाइफस्टाइल रहेगा, इसको करते थे, इस कारण बीमारी नहीं पड़ते थे। तो फाहियान ने यह कहा है कि भारत में अस्पताल नहीं है और बीमार नहीं पड़ रहे हैं लोग। तो कारण क्या है, तो कारण हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर। क्योर का भी था, सुश्रुत का और बाकी है, भाई मौका होगा तो मैं बताऊंगा। तो बुद्ध के समय की एक घटना है, जीवक थे, बुद्ध बीमार पड़ गए, उनको मलेरिया हो गया। तो बुद्ध ने कहा कि भाई जरा, सुश्रुत वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जरा कुलपति को ले आओ। तो शिष्य लोग गए, तो उस समय जीवक कुलपति था, सुश्रुत ने जीवक को अपना दे करके, वो अपना रिटायरमेंट में थे, आराम से थे वहाँ पर, लेकिन उन्होंने कुलपति को कहा कि बुद्ध बुला रहे हैं चलो। तो जीवक गया, उनका ट्रीटमेंट किया और ठीक हो गए। उन्होंने कहा कि भाई कुलपति क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा सर कुलपति को तो लेकर आए। बुद्ध को उन्होंने कहा कि भाई कुलपति तो आया है, बोले तुम कब से कुलपति बने, बोला मैं भी कुछ महीना पहले मैं बना हूँ। तो जीवक कौन है, तो जीवक के बारे में, जब जीवक की पढ़ाई पूर्ण हुई और जब वो सुश्रुत के पास गए और कहा कि गुरुदेव मुझे कुछ जाओ घर जाना, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाओ। उनका नहीं, कुछ गुरुदक्षिणा देना चाहता हूँ, आपसे मुझे ज्ञान मिला है, तो वो ज्ञान मेरे साक्षात्कार में उपयोग हो, यानी मैं उसका अनुभूति मुझे हो, इसके लिए मुझे कुछ गुरुदक्षिणा देने से मेरा शिक्षा पूर्ण होगा, बताइए। तो अलग अलग गुरु अलग अलग मांगते हैं, भारत में बहुत हजारों घटनाएं हैं, गुरु क्या मांगता है। तो सुश्रुत ने कहा कि जाओ इस जंगल में ऐसा कोई पेड़ ढूंढ के लाओ जिसकी कोई भी चीज़ें बेकार हो, मैंने कोई भी चीज़ उपयोग नहीं है, किसी पेड़ का जड़, पत्ता, फूल, पौधे या उसके तना, उसके छिलके कुछ भी काम का नहीं है, वेस्ट है, ऐसा कोई पौधा तो लेके आओ। तो गया जीवक जंगल से, लौट के नहीं आ पाया, 10 साल हो गए। तो सुश्रुत ढूंढने गए, तो बैठा था, कुछ गरम ठंडा कुछ कर रहा था, कुछ मटके वटके में कर रहा था सब। तो बोला अरे क्या हो गया जीवक, बोला गुरुदेव अध्ययन कर रहा हूँ। कितना हो गया, बोले 40,000 पौधे का हो गया। तो अभी तो शुरू किया, पूरा हिमालय बाकी है। बोला नहीं मिलेगा बेटा, ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसमें औषधि गुण नहीं है, चलो लौट के चलो। बोला गुरुजी मेरा तो फिर गुरुदक्षिणा कैसे होगा। बोला तुम्हारा गुरुदक्षिणा यह है कि तू यहाँ कुलपति बन, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, तू कर। और 86,000 प्रकार की बीमारियों का उन्होंने इलाज ढूंढा है, जो आयुर्वेद में वर्णन है उसके बारे में, बहुत डिटेल्स है। तो हमारे यहाँ अनुभूति को शिक्षा कहा है, जो किताबें पढ़ाई वो नहीं है, जो खुद किया उन्होंने जंगल में बैठ करके, और 10 वर्षों में जो 40,000 पौधों का अध्ययन किया है और उसमें जो उन्होंने 86,000 प्रकार के बीमारियों का इलाज ढूंढा है, वो अनुभूति उसकी शिक्षा है।
और वो वाइस चांसलर बना। ऐसे बहुत लोग वाइस चांसलर बने हैं, जो कुलपति बने हैं, जिसमें सत्यकाम जाबाल है, उपमन्यु है, या ऐसे बहुत लोग हैं, मैं अभी नाम नहीं बता रहा हूँ। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि जो झगड़े होते थे, चोरी जमाने के जो भी होते थे, 100% गांव में हो जाते थे। कोई बड़ी घटना होने से राजा के पास जाता था। ऐसे उन्होंने बहुत से कुछ बुलेट पॉइंट्स मैंने उसमें दिया है। और मजेदार बात है, हुयान सांग भी भारत में आया। इसने भी, और ये बहुत विद्वान रहा है, और लगभग इसने जो किताबें जो लिखी है 657 किताबें लिखी है। और ये जो हुयान सांग भारत में आए तो ये भी वहाँ बहुत तर्कवत करके समझ में नहीं आया, तो वापस आए। तो यहाँ पर ही वो शीलभद्र जो उस समय बनते थे नालंदा में, उनका शिष्य बना, और 2 साल में 2 डिग्री इन्होंने मास्टर डिग्री किया, और 27 सब्जेक्ट किताब लेकर के यहाँ से गया, 1000 खच्चर में ऊँटों पर। उस समय हर्षवर्धन यहाँ के भारत के सम्राट थे, तो हर्षवर्धन से बड़ा इनको प्रभावित हुआ। तो हर्षवर्धन, एक घटना बताता हूँ इसका, वैसे घटना है तो मैंने कुछ डाला है इसमें। कुंभ में कल्पवास में गए, तो हर्षवर्धन ने कहा कि मैं कुंभ में जा रहा हूँ, 1 महीना रहने वाला हूँ प्रयागराज में, तुम भी चलो मेरे साथ। तो उसने गया वहाँ पर। तो पहला दिन वो गंगा स्नान करने के बाद सुबह सुबह दान दे रहा था। दान देते समय वहाँ बड़े बड़े पीतल और तांबे के हंडी में मोती, हीरा, टोपास, माणिक्य, पन्ना, ये सब रखे हुए थे। तो हाथों से उठा उठा के कोई जो मांग रहा है उसको दे रहे थे। कोई कह रहे कि भाई सोने के सिक्के दे दो, तो उठा उठा के सोने के सिक्के दे रहे थे लोग, ऐसे गमछा से ले रहे थे लोग। तो ये तो छाती पीट रहा था, अरे क्या कर रहे महाराज, इतना दे रहे। और 200-300 लोग लेके गए। फिर शाम को दिया, दूसरे दिन फिर सवेरे दिया। उसने कहा कि राजा तो कंगाल हो जाएगा, सड़क पर आ जाएगा। उन्होंने उसको दीवान को कहा कि भाई इतना बांट रहे हैं ये, और ये कौन लोग हैं, फकड़ लोग हैं, नंगे धड़ंग लोग हैं, गमछा बांध के आए हुए ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा बोलना मत, ये सब बड़े लोग हैं, ये सब बड़े बड़े आश्रम चलाने वाले, बड़े बड़े पाठशाला चलाने वाले, बड़े बड़े गुरुकुल चलाने वाले, सब वाइस चांसलर्स लोग हैं ये सारे। ये साल भर 12 साल के लिए धन लेने के जा रहे हैं यहाँ से। 12 साल जो इनको गुरुकुल चलाना है उसके लिए धन ले रहे हैं। ये तो सौभाग्य की बात है कि हमसे ले रहे हैं, ये तो 12 साल किसी से लेंगे नहीं, ये हमको जाके वहाँ देना पड़ेगा, ये हमारे पास आएंगे भी नहीं। ये और ये तो सौभाग्य कि राजा के पास आके ले रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये तो एक मुट्ठी भर खजाना लाया है। तो उसने कहा कि इतना धन, इतना सोना चांदी हीरा मोती सब बड़ा रोज बांट रहे हैं, 30 दिन में 60 बार बांटा है, और हर बार 200-300 लोग लेके जा रहे हैं। दूसरा बार नहीं आया, जो एक बार लिया दूसरा बार नहीं आया। तो उनको लगा कि खजाना खत्म हो जाएगा। तो हर्षवर्धन को पूछा, हर्षवर्धन ने कहा नहीं बहुत है, बस एक मुट्ठी खजाना लाया था। तो उसने कहा कि भाई धन आपके पास बहुत है। उन्होंने कहा मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मेरे से ज़्यादा तो गौड़ राजा के पास है। तो बंगाल आए, यहाँ जो गौड़ वंशीय जो राजा लोग थे, वो देखा तो उनकी समृद्धि देखा तो घबरा गया, हर्षवर्धन से ज़्यादा पैसा इसके पास है। तो गौड़ को पूछा तो उसने कहा कि गौड़ राजा ने कहा कि भाई मेरे पास तो उतना नहीं है, कामरूप के पास बहुत ज़्यादा है, कामरूप के राजा के पास है। तो कामरूप गया, कामरूप के पास भी समृद्धि थी, हाथी घोड़े उसके पास भी थी। उन्होंने कहा मेरे पास ज़्यादा नहीं, कलिंग में ज़्यादा है। तो कलिंग में आया, तो कलिंग के राजा ने कहा कि भाई मेरे पास कहाँ है, वो तो उत्कल वालों के पास है। उत्कल में गया तो उसने कहा मेरे पास कहाँ, काकतीय के पास है। काकतीय के पास गया तो काकतीय वाले जो है वो कहा कि भाई ये तो चोल के पास है, पांडियन के पास है, फिर उसके पास है। ऐसे करते करते जो भारत में वो पूरा भ्रमण किया, वर्णन किया उन्होंने। 100 से ज़्यादा जो साम्राज्य है 14 वर्षों में घुमा है, उनके बारे में लिखा है। कितनी संपत्तियां थी, कितनी सेनाएं थी, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, और लोगों के पास में। अभी आपको लगता है कि आर्थिक पैसा कहाँ से आया है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, पिछले 6000 वर्षों में भारत से लोहा पूरे दुनिया में गया है। पूरे दुनिया में हथियार जितने भी लोहे के गए हैं, जो यूनान में जो लड़ करके भारत के लिए लड़ने के लिए जो लेकर आ रहा था, उसको भी सोना भारत से गए, लोहा जो है, हथियार जो है भारत से गए हुए हैं। चंगेज खां के समय के आप हथियार देखेंगे तो चंगेज खां की जो पहले बार जो मारा गया, चंगेज खां की जो टीम मारी गई, उसमें जो हथियार थे उसको उन्होंने कहा ये दैवीय शक्ति है, ये भगवान ने विशेष शक्ति दिया है। उसको लोहे का जो कटार था जिसको लंबे मार देते थे, उसके पास नहीं था किसी के पास। बाद में चंगेज खान ने उसको ले, कभी मौका होगा तो बताएंगे कैसे लोहे चंगेज खान के पास गए। आप यूट्यूब में सब है, ये सारा देख लीजिएगा उसमें। हुयान सांग के बाद में भारत में ईजिंग करके व्यक्ति आए और उन्होंने ट्रांसलेट किया, पाली को चीनी में ट्रांसलेट किया, और फिर चीनी से फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ, जो आजकल किताबें बड़े उपलब्ध है। और भारत का पूरा वर्णन है उसमें, भारत का। और सभी लोगों ने यही 4-5 चीज़ें बताई, एजुकेशन सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मिलिट्री का, और जो
एग्रीकल्चर जो सिस्टम है, यानी सब लोगों ने 3-4 बातें कॉमन बताई कि भारत में कोई गुलाम नहीं है, भारत के घरों में ताले नहीं लगते हैं, भारत में सारे लोग समृद्ध हैं। हुयान सांग की एक बड़ी जबरदस्त घटना है। हुयान सांग जब घोड़े में बैठ के जा रहे थे कामरूप की तरफ में, तो जमीन में एक बड़ा सोने का चेन पड़ा हुआ मिला, कोई 50-60 ग्राम का सोने का चेन पड़ा था सोने का। तो उतर गया, तब तक देखा पीछे से लोग आ रहे हैं, तो उसको लगा कि शायद सामने से लोग आ रहे हैं, शायद कोई आया होगा, तो रुक गया वो कि भाई वो उठाएगा। नहीं उठाया, एक घोड़े को बांधा खड़ा रहा वहाँ, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं देख रहे हैं, कोई उठा नहीं रहा है। तो उसने कहा कि अभी सोने का चेन गिरा है। बोला हाँ पता नहीं किसी का होगा। तो जो किसी को बोला मेरा नहीं है, तो बोले लेकिन इतना बड़ा सोना का टुकड़ा, इतना बड़ा सोना का चेन गिरा है यहाँ पर, 50-60 ग्राम का होगा, उन दिनों तो बड़े बड़े पहनते थे लोग। नहीं उठाया किसी ने। तो एक गरीब परिवार आ रहा था, कंधे पर कुड़ाल उड़ाल रखा था, 2-3 महिलाएं थी, आ रहे थे, पुरुष को लगा ये गरीब है ये उठाएगा, नहीं उठाया, पार कर गया। तो उसको रोका, बोला भाई वो सोना का पड़ा हुआ पीछे आपने देखा? हाँ देखा, वो तो 2 दिन से पड़ा है वहां पर, तुमने उठाया क्यों नहीं? बोला मेरे की जरूरत नहीं है, मेरे घर में बहुत है, मेरे घर में बहुत है, मेरी जरूरत नहीं है। तो उसने लिखा है कि भारत में जमीन में गिरे हुए सोने को कोई उठाता नहीं है, किसी और का है, हमारा नहीं है। ये हुयान सांग का किताब में है, वर्णन है। तो ऐसे ही ईजिंग ने बहुत सी बातें भारत के बारे में लिखी है। उसके बाद में हेचो भारत में आया। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। हेचो ने एक बात कही, जब ये आया था तो उस समय सिंध में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो चुका था, कब्जा कर चुका था। और मोहम्मद बिन कासिम ने, जो उनको बुलाए गए थे, हेचो के जब वहाँ गया तो मोहम्मद बिन कासिम 30,000 बुद्धिस्टों की हत्या कर दिया था। 30,000 बुद्धिस्टों का गर्दन काट दिया था, क्योंकि उस 3 बार आक्रमण किया उसने। पहली बार आक्रमण किया तो दाहिर ने उसको मारकर भगा दिया, दूसरी बार आया तो उसको इतना मारा कि वो फिर से खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जो 30,000 बुद्धिस्ट लोग थे, ये जाकर के उसको कहे कि भाई तुम भारत में आक्रमण करो, हिंदू राजा है, ये बुद्धिस्ट नहीं बन रहा है, हम तुमको सब प्रकार के रसद पैसा ये देंगे, इलाज भी करेंगे। और आक्रमण के लिए बुलाया, और आक्रमण के उसने कहा कि देखो राजा से तुम नहीं लड़ सकते हो, सेना से तुम नहीं लड़ सकते हो, तुमको व्यापारियों को लूटना पड़ेगा। ये जो शक्ति है, इस राजा की शक्ति व्यापारी है, पैसा है, धन है। तुम उनको व्यापारियों को मारो, धन को मारो, उसको अपमान करो, तो ये राजा कमजोर हो जाएगा, राजा सरेंडर कर जाएगा। आज भी हुआ, इंडिगो का प्रॉब्लम आया तो सरकार झुक गई। तो व्यापारी को जब दिक्कत होता है तो समाज को दिक्कत होता है, तो फिर राजा झुकता है उसमें। तो ये टेक्निक बताया बुद्धिस्टों ने वहाँ उस समय जो थे सिंध में। तो उसने आक्रमण किया और बाजारों को लूटा, और उसके बाद ही भारत में ये लूटमाट शुरू हुई। ये टेक्निक जो बताया उसमें, एक किताब में वर्णन है, डिटेल्स है, हेचो ने इसको लिखा है। हेचो ने दूसरे ढंग से लिखा है। उसने लिखा है कि सुल्तान की जो पत्नियां हैं वो सब बुद्धिस्ट है। कैसे सुल्तान की पत्नी बुद्धिस्ट होगी? वो तो हरम बना कर रखा था उसने, सब बुद्धिस्टों को मार दिया था, उसकी पत्नियों को, उसके बच्चों को, महिलाओं को उठा के लाया था, हरम बना कर रखा था। लेकिन उसने थोड़ा सॉफ्ट भाषा में लिखा है कि सुल्तान जो है उसकी सारी जो बीवियां हैं वो सब बुद्धिस्ट है। ये वर्णन है उसमें। हेचो ने थोड़े इसमें लेकिन दुख व्यक्त किया है कि भारत में अब बुद्धिज्म के लिए खतरा हो गया है। भारत में अब बुद्धिज्म के लिए ये क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा, फिर वो तो बुद्धिस्टों को मारा, उसने 30,000 लोगों को मारा है। इसका वर्णन उस किताब में है। हेचो को इसलिए मैंने वर्णन किया, ये उसकी कुछ ड्राफ्ट्स मैंने दिए हैं। हेचो ने जो किताब ट्रांसलेट किया उसके कुछ पांडुलिपि है, ये आपको मिल जाएगा। जीन द बाप्टिस्ट जो है, ट्रैवर्नियर है, तो ये भारत में आए थे। अभी आपने जर्मनी में देखा होगा, एक लूट हुआ था वहाँ के म्यूजियम में, जर्मनी के लूज में, और 2 लोगों ने मिलकर के, अभी कुछ महीना भर पहले की घटना, महीना 1.5 महीना पहले की, तो बहुत कीमती सामान सब चोरी करके लेके चले गए थे। 2 लोग आए थे, सर्विस करने के नाम पर आए थे। आपने ध्यान दिया क्या किसी ने? किसी को पता है क्या ये बात? ये तो गूगल में पढ़िएगा, हाँ गूगल में देख लीजिएगा। अभी बड़ी जबरदस्त बड़ी बड़ी घटना हुई, मतलब बहुत आसानी से दिन में 11 बजे पूरे लोग, विजिटर्स लोग घूम रहे हैं, उस बीच में उन्होंने सब सामान चोरी किया, और काफी कीमती सामान, 700-800 करोड़ रुपए के सामान लेके गए म्यूजियम से। मजेदार बात है, वहीं पर रखा हुआ एक हीरा वो लेकर रह गए जो भारत से गया था। एक नीलम था, एक हीरा था, ब्लू डायमंड था। और मजेदार बात है कि वो उसके बारे में कहा कि वो शापित है, गोलकुंडा में मिला था, और गोलकुंडा से वो होते होते वहाँ गया था, और जो प्रिंस लुइस जो थे उसने उसको खरीदा था। वहाँ उस डायमंड को जिसने भी चोरी किया उसकी हत्या हुई है। उसका इतिहास ये है
कि उसके जब नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट के पास भी था, उसके यहाँ से जो चोरी किया था जो व्यक्ति, उसकी हत्या हो गई थी और वो डायमंड वापस राजा के पास आ गया था। तो ये जो चोर थे उसके अगल बगल के कम कीमत वाली चीज़ों को उठा लिए, लेकिन उस डायमंड को हाथ नहीं लगाया उन्होंने, क्योंकि उसके बारे में ये था कि इसको जो उठाता है वो मारा जाता है। जैसे कोहिनूर के बारे में, कोहिनूर जिस राजा के पास गया उसका राज्य खत्म हो गया, चाहे वो गोलकुंडा का राजा हो, चाहे वो आंध्रा का जो कृष्णदेवराय का राजा हो, चाहे वो सब राजाओं का ये हुआ। और अंत में रंजीत सिंह के पास थी, रंजीत सिंह से फिर लंदन गए, तो लंदन में तो रोज घट रहे हैं, तो ये घटना उसमें है। तो वो यहीं से भारत से गया था और जीन द बाप्टिस्ट जो है उसको ट्रैवलर उसको लेके गया था। हल बरूनी ने भारत के बारे में बहुत लिखा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है, और उसने कुछ ग्राफिक्स भी बनाए, उसने संस्कृत सीखा, और 114 किताबें उनकी पूरी कुल मिलाकर के बनी है। तहरीक उल हिंद एक किताब है, तहरीक उल हिंद और तहरीक उल इस 2 किताबों में उसने मजेदार बात लिखी है। उसने कहा कि सुल्तान के राज्य में मोहम्मद गजनी का वो जासूस था और भारत में 2 वर्षों तक उन्होंने खास करके मथुरा में रहकर पंडितों के साथ संस्कृत सीख करके और बहुत सी चीज़ों का अध्ययन किया था। उसमें उन्होंने लिखा है, यानी 1018 में भारत में आया था और 1030 तक भारत में वो रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। तो उसने जो भारत की जो साइंस है उसके ऊपर बहुत काम किया, खास करके ज्योतिष के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर में। और पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूरज की चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सारे डायग्राम बनाए उन्होंने, जो पंडितों ने उनको बताया। उसमें उन्होंने कहा कि सुल्तान के राज्य में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ, लेकिन जो 4 डिजिट से ज़्यादा मेरा ये नॉलेज नहीं है। लेकिन भारत में लोग 17 डिजिट तक मैथमेटिक्स करते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ऐसे मैंने एक लंबा उसका बताया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं स्कूलों में वो 27 10 टू द पावर 27, यानी मैंने 1 के बगल में 27 सुनना लगाइए, उतना डिजिट तक वो जानते हैं। लेकिन जो पंडित हैं वो 10 टू द पावर 53 तक का गणित करते हैं, यानी जो परमेष्टि का उम्र है, यानी ब्रह्मा का उम्र है, वो निकालते हैं। और मजेदार बात है, जैन शास्त्र में आप पढ़ेंगे, आगम शास्त्र में या हिंदू के आगम शास्त्र में 10 टू द पावर 97 जैन में है, 10 टू द पावर 153 ये हमारी विष्णु पुराणों में है। जो कभी मौका होगा, मैं अभी एक फिजिक्स का इसमें था, एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर में, तो मैं बताने वाला हूँ कि कैसे ये ब्रह्मांड बना और कैसे। तो हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदीय सूक्त है। अभी एक छोटे से कण से ये पूरा बनता है। अभी हम ब्लैक होल हम जानते हैं, ब्लैक होल में कितने लाखों करोड़ों सूर्य का ग्रेविटी इतना है, एक छोटे से बिंदु में आ गया। कारुण्य ने एक बरगद के पेड़ में, कि ये जो बरगद का पेड़ है उसमें फल है, उसमें नीचे में एक बीज है, एक छोटा सा बीज है, उसको लगाओ तो फिर से बरगद पेड़ बड़ा बन जाएगा। इतना जो विशाल बरगद है वो छोटे से बीज में आ गया और छोटा से बीज से फिर इतना बड़ा विशाल बन गया। तो ऐसे ही ब्रह्मांड बनते हैं, ब्रह्मांड छोटे में आ जाता है, फिर उसमें विकसित होकर फिर बड़ा बन जाता है, फिर छोटे में आ जाता है। तो ये कभी मौका होगा तो उसका एस्ट्रोफिजिक्स का मैं आपको डिटेल्स में कभी बताऊंगा कि कैसे हमारे नासदीय सूक्त में इसको डिटेल्स में उन्होंने वर्णन किया है। तो अल बरूनी ने इसका डायग्राम बनाया है। वो डायग्राम जो अल बरूनी ने बनाया मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये डायग्राम अल बरूनी की किताब में है, कलर किया है, लेकिन उसका वो काला इसमें यह है, ब्लैक एंड व्हाइट है, तो कलर किया है इसमें। तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में उसने कहा कि भारतीय ज्योतिषी इतना सटीक बताते हैं कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कितना सेकंड कितना मिनट का होगा, चंद्र ग्रहण कितना होगा, ये अल बरूनी की किताब में है। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले पंडित बता देते हैं, वो ब्राह्मण बता देते हैं कि कब सूर्य ग्रहण कब चंद्र ग्रहण होगा। और उन्होंने ज्योतिषी के बारे में कहा कि लोग आते हैं अपनी समस्या पूछते हैं तो उनको बताते हैं और 100% ठीक होता है। और मजेदार बात है कि उन्होंने जो ये बताया कि गिनती के बारे में उन्होंने बताया 27 53 मैंने आपको बोला ही है। उन्होंने 146 किताबें जो है बाद में ये भी आया है, डायग्राम भी मैंने आपको बताया है। एक मजेदार बात है कि जिस समय जो वृंदावन का जो मथुरा में जो मंदिर था, कृष्ण का मंदिर था, उसको तोड़ा उसको जलाया उसको पूरा, तो उसको बहुत बुरा लगा। अल बरूनी ने कहा कि भाई सुल्तान यहाँ की जो मूर्तियाँ तो चोरी करके लेके गए, मूर्तियाँ तो उन्होंने उठाया, और एक एक मूर्ति जो है, अब सोचिए 140 किलो के सोने की मूर्ति थी, 140 किलो वजन के सोने की मूर्ति कृष्ण की थी, राधा की थी, राधा की नहीं मतलब रुक्मिणी की थी। ये दो मूर्तियां उन्होंने उठा कर लेके गए उस समय सोने की। और ऐसे इसी वजन के, इतने ही वजन के यानी 140 किलो के 200 मूर्तियां चांदी की उसको लेके गया। और फिर घंटी बताया उसने, 40 मन का घंटी था सोने का, उसको लेके गया।
तो ये तकलीफ नहीं था उसको, तकलीफ था दो कारण से। एक तो उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़ा, जलाया उसको, उस समय जो चंदन के लकड़ियों का दरवाजे और सब काफी थे, सब जल गए। इससे भी ज्यादा दुख हुआ कि उन सब ब्राह्मणों का जो विद्वान थे उसको मार दिया उसने, जो इतने ज्ञानी थे, इतने विद्वान थे कि 2 साल 3 साल क्या क्या घटना हो सकती है, 10 साल क्या घटना हो सकती है, कैलकुलेशन करके बताते थे, और सत्य घटनाएं हुई है, मेरे सामने ये सारी घटनाएं हुई है। ऐसे लोगों को मार दिया जो इतने विद्वान थे, उनको बड़ी श्रद्धा थी उन ब्राह्मणों के बारे में। सुल्तान ने अच्छा नहीं किया, नहीं करना चाहिए था, केवल धन के लिए आया तो धन लेके जाना चाहिए था। और महिलाओं का सम्मान, उसने बड़ा जोरदार बात कहा है कि ये जो हिंदू लोग हैं बड़े मूर्ख हैं, अपनी पत्नी की बात सुनते हैं, पत्नी से पूछे बिना कोई काम करते नहीं है, पत्नी को पूछ कर हर काम करते हैं, ये लिखा उसने। और फिर कहा कि अलग अलग थाली में खाते हैं, एक साथ एक थाली में नहीं खाते हैं, केवल पति पत्नी एक थाली में खाते हैं, बाकी तो अलग अलग थाली में खाते हैं। मजेदार बात उसने लिखा है कि भाई ये महिलाओं को इतना सम्मान क्यों देते हैं, ये लिखा है उसने। भारत में 1000 साल पहले पति पत्नी को पूछे बिना कोई काम नहीं करते हैं, ये विदेशी लिख रहा है। और हमारे यहाँ भारत में अर्धनारीश्वर कहा गया, शिव शक्ति के बिना शिव का ताकत नहीं, शिव अगर शक्ति हटा दिया तो शिव का कोई नहीं, शव हो जाता है वो, शव जो है उसमें अगर शक्ति आ गई तो शिव हो गया वो। तो हमारे यहाँ तो अर्धनारीश्वर कहा, बेटर ऑफ कहा है, बाएं तरफ कहा है, हार्ट बाएं तरफ में है, यानी शरीर का जो मुख्य अंग है वो बाएं तरफ में है, इसलिए कहा कि हृदय, महिला का हृदय कहा गया है। और 50% का है, हमारे यहाँ तो 33% का कॉन्सेप्ट नहीं है, महिला हमारे यहाँ 50% का है, और इसलिए नाम पहले आता है, सीताराम आता है, राधेश्याम आता है, पहले महिला का नाम होता है। लेकिन ये अल-बेरूनी ने उसको लिखा है, समय नहीं है चूंकि मुझे 4 बजे खत्म करना, तो सर बोले 1 घंटा आप बोलिए, तो अभी 10 मिनट बचा है। तो अल-बेरूनी ने बहुत सी बातें कही है। उसके बाद में मार्को पोलो है, मार्को पोलो की डायरी मिल गई है, मार्को पोलो की डायरी में भी बात आ गया है। मार्को पोलो कभी डीप सी में गया नहीं था, वो किनारे किनारे आ रहा था, भारत में होड़ मची हुई थी, तो होड़ मची हुई थी तो उसको उसमें वो भी आ गया, मार्को पोलो भी। लेकिन मार्को पोलो का जो ये था, ये एक तरह से एक किताब है ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो, उसमें 3 वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम है, तीसरा वॉल्यूम उसने भारत के बारे में किया। ये दरअसल कुबलाई खान का ये कॉमर्स मिनिस्टर था, तो कुबलाई खान की जितनी संपत्तियां थी जो दुनिया भर में लूट करके उसने जमा किया था, वो सब लेके भागा, कभी समुद्र में गया नहीं था, तो भागा, लेकिन समुद्र में आया तो फंस गया, और इसके लोग मर गए, 300 लोग मर गए, 2 जहाज थे। तो जापान की तौर से जो भारत में लौट रहे थे कुछ व्यापारी, हिंदू व्यापारी, वो इनको देखे कि भाई समुद्र में जहाज भटक रहा है, लोग ये, तो उन्होंने पानी वानी दिया, खाना दिया, समुद्र में जो बीमारियां होती है उसका इलाज किया, और उसको काकतिया लाया। तो जहाज भी थोड़े टूट फूट गए थे, तो काकतिया में लाया, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ इलाज विलाज कर लो और हम लोग आगे जाते हैं। तो वहाँ उस समय काकतिया में रुद्रमा देवी थी, और 26 साल की थी, घोड़े पर बैठ के जा रही थी। उन्हें आश्चर्य क्या है कि महिला और शासक, यानी महिला का प्रश्न ही नहीं होता है, न चाइना में ना यूनान में, जो वो थे वेनिस के थे, वेनिस में रहते थे वो, वहाँ भी कोई महिला का कोई था ही नहीं उसको। अभी अभी तो इंग्लैंड वगैरह में तो महिलाओं को सम्मान अभी मिलने लगा, वोट अधिकार तो अभी मिलने लगा ब्रिटिश में, तो पहले कहाँ था। अभी भी चर्च में महिलाओं का कोई है ही नहीं, वो तो नन हो सकती है, वहाँ तो पावर नहीं होता। हम सिस्टर बोलते हैं, मदर बोलते हैं, हम मदर टेरेसा बोलते हैं, लेकिन वो तो नन ही मानते हैं उसको, सेविका ही मानते हैं, वहाँ तो उसको अधिकार मिला नहीं है। हम लोग यहाँ सेंट बोलते हैं उसको, लेकिन वहाँ विदेशों में उसको सेंट नहीं, वो नन ही है, उसके ड्रेस भी नन ही है मदर टेरेसा का। हमने मदर बोला उनको, लेकिन दुनिया नहीं बोलता है, उनके सिस्टम में मदर नहीं है, उनके सिस्टम में नन ही है, उनके सिस्टम में फादर है, और हमारे सिस्टम में मदर है। इसको भी समझने की जरूरत है। तो मार्को पोलो जो है, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक महिला घोड़े पर बैठ कर शासन कर रही है। तो बंदरगाह में आई थी, तो बताया गया कि भाई एक राजा का है, मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, और इसको पैसे का दिक्कत, मैंने गाड़ी का दिक्कत हो गया है, जिसको ठीक करना है। बोले देखो भाई हम टेम्परेरी कर सकते हैं, तुम्हारा जहाज ज़्यादा टूट फूट गया है, तुम एक काम करो, मैं पत्र लिख देता हूँ, तुम चोल राजा के पास जाओ, चोल राजा तुम्हारा काम कर देंगे। तो आया चोल राजा के पास, चोल राजा के दरबार में गया, तो जब ये मिलने के लिए गया, तो जितना सोना ये दुनिया का समझ रहा था मेरे पास है, पूरी दुनिया की संपत्ति लूट कर मैं लाया हूं, मेरे पास है, उतना तो राजा पहन कर बैठा हुआ था वहां पर। उसने कहा कि भाई इतने, उसको पूछा दीवान को, इतने सोने के सिंहासन और इतने हीरे मोती जड़े हुए राजा के ड्रेस, बोला नहीं आज का है ये ड्रेस दोबारा वो 2 साल के बाद पहनेंगे। बोले कल? बोला उसके 2 साल के ड्रेस हैं। बोले तो छाती पीट लिया कि मैं सोच रहा था दुनिया की सारी संपत्ति मेरे पास है, एक राजा के पास इतनी संपत्ति है। सभी लोगों ने ये लिखा है
कि राजाओं के पास जो संपत्तियों को देखने के बाद सभी लोग आश्चर्यचकित थे। तो राजा को मिला। दूसरा दिन जब राजा को मिलने के लिए गया तो तालाब के किनारे बैठ करके एक गमछा पहन करके तालाब में वो उन्होंने लिखा कि भाई जमीन में बैठ के घास पे बैठ के खाना खा रहे हैं सुबेरे। तो मेरा अनुमान है कि श्राद्ध देखा होगा, उनके पिताजी माताजी का कोई श्राद्ध कर रहे होंगे, राजा तर्पण कर रहे होंगे, पिंडदान कर रहे होंगे। उस समय उसने देखा होगा कि राजा नंगे हैं, कपड़े नहीं हैं, एक गमछा पहन के नदी किनारे बैठे हैं और जमीन में खा नहीं रहे होंगे, भात कर रहे होंगे कुछ। तो बाद में राजा को भोजन कराया होगा, उसको श्राद्ध भोजन कराया होगा, बड़ा टेस्टी लगा। उसने कहा कि इतना बढ़िया सुंदर, क्या चीज़ से बना है? तो उसने कहा भाई मसाले हैं। तो मसाला दिया उनको। बोले कौन चीज़ क्या है? तो थोड़ा बोला देखिए काम करो, तुम मालाबार चले जाओ, मैं चिट्ठी लिख देता हूँ, मेरे रिश्तेदार है, राजा है, मेरी बेटी भी वहाँ है, तुमको दे देगी वो। तो गया। तो इसको लगा कि भाई ये जो मसाला है ये मैं ले लूँगा और पैसा दे दूँगा। तो जितना पैसा था ये पैसा दे दूँगा और मसाला ले जाऊँगा, इतना बढ़िया स्वादिष्ट खाना, तो मैं पूरा यूरोप खरीद लूँगा मसाला बेचकर। तो राजा को बता, राजा डांटा वाला, रे बेवकूफ, इतना छोड़ा के लिए क्या है? 50-50 बोरा दे दिया, लौंग ले जाओ, इलायची ले जाओ, दालचीनी ले जाओ, 50-50 बोरा। बोले इतना सामान दे दिया और पैसा भी नहीं ले रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। और जब वो आया और उसके बाद जो किताबें लिखी, वो 2 साल जेल में भी रहा, तो 2 वॉल्यूम उसका 2 किताब बनी, हाथ से लिखा गया। वही किताब पढ़कर क्रिस्टोफर कोलंबस भारत आया, क्योंकि उसने कहा था कि मैं मसाला बेचकर पूरा यूरोप खरीद लूंगा। और जो चीनी, आपको लगता है ना चीनी, ये सारे गुड़ भारत से गए, गुड़, ये गुड़ लेके गया था यहाँ से, मीठा लेके गया था मार्को पोलो। तो मार्को पोलो की किताब जब मिली उसको, क्रिस्टोफर कोलंबस को, बहुत विषय है, समय नहीं है तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत आने का योजना बनाया कि मैं भारत आऊँगा, भारत में इसका बिजनेस करूँगा और भारत से मसाला लेके जाऊँगा और पूरे यूरोप में बेच करके यूरोप खरीदूँगा। तो लेकिन अकेले नहीं आ सकता था, कुछ टीम को निकाला, फिर एलिजाबेथ से बात किया, फिर वहाँ से इनको कुछ पैसे मिले और जो कैथोलिक राज्य था उन सब से कैथोलिक राज्य से बात करके इकट्ठा करके, लेकिन पहुँच गया अमेरिका। 3 बार उसके मैं फ़ोटो भी डाला हूँ, ये 3 उसके रूट हैं, ये सारे रूट पे वो गया, तीनों बार अमेरिका पहुँच गया। और बाद में जब चौथी बार जाने के लिए कोशिश किया तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं दे सकते हैं पैसा, और तुम लोग एक कंपनी बनाओ और सब मिलके पैसा डालो और उसमें से फिर प्रॉफिट शेयर करो। अब ये जो किताब था पढ़ लिया, मार्को पोलो का किताब तो सबने पढ़ा, जर्मनी में ट्रांसलेशन हुआ, फ्रांस में ट्रांसलेशन हुआ, नीदरलैंड में ट्रांसलेशन हुआ, तो यूरोप से लोग भाग कर आने लगे भारत में व्यापार करने के लिए। उसी में वास्को डी गामा भी भारत में आया। वास्को डी गामा भी जो आया था भारत में, तो वो भी ऐसे ही करके आया था कि भारत में व्यापार करेंगे, पहले पहुंच गया। क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले वास्को डी गामा आ गया। तो ये कुछ चित्र मैंने दिया है। वास्को डी गामा की भी डायरी भी मिली है, उसने भी अब पूरा कैसे कैसे किताब है उसको लिखा है। और उसने लिखा कि मैं समुद्र में कभी गया नहीं था, बीच बीच में आया था, लेकिन था उसके पास। तो उसको भी जब वो मेडागास्कर में फंस गया था, मेडागास्कर से उसको जो व्यापारी थे वो लाए, कालीकट में छोड़ करके गए, जो केरल के व्यापारी थे, तो उनको समुद्र में लेकर आए, उनको अपने जहाज में बैठाए, इनके लोग उनके जहाज बैठाकर ले आए। तो उसका वर्णन है, वो उसकी डायरी भी उसमें मिली है। और वास्को डी गामा जो आया उसके भी कहाँ से आया, मेडागास्कर से कैसे आया, उसका भी रूट मैप सब उसमें है, उसकी डायरी में है, मिल गया है सारा। लेकिन वास्को डी गामा भारत में आने के बाद में भी जो उसकी जो फ्रांस की जो प्रोसेस यहाँ डेवलप हुई, अभी जो फ्रेंच हम जो पुदुचेरी कहते हैं वो सब, और जो गोवा में जो कैथोलिक चर्च की जो ये हुआ और गोवा का जो बड़ा काम, उसमें वास्को डी गामा का ही उसमें ये है। उसके बाद एक बर्नियर आया भारत में, उसके कुछ साल के बाद में। बर्नियर की भी किताब है, ट्रैवल्स ऑफ बर्नियर की, बहुत ज़बरदस्त किताब है। जब बर्नियर भारत में आया और 15 साल रहा, तो शाहजहां उस समय राजा थे। तो शाहजहां के राज्य में क्या था, तो उसने अंदरूनी जो घटना है, यानी जो किस प्रकार से शाहजहां को कैद किया और औरंगजेब ने कैसे अपने भाई दारा शिकोह को मारा, दारा शिकोह कैसा था और आगरा में कैसे उसको कैद किया, उस समय क्या क्या घटनाएं, बड़ा डिटेल्स वर्णन है। यानी जो कैसे हिंदू राजाओं की हत्याएं हुई, हिंदू राजाओं के ऊपर में कैसे उसको डिवाइड किया गया, वो सारे डिटेल्स में है। लेकिन उसके बाद भी भारत समृद्ध था, यानी औरंगजेब ने इतना लूटा, उसको वर्णन है कितना कहाँ कहाँ से कौन कौन राजा को मारकर कितनी संपत्ति उन्होंने इकट्ठा कर ली। उसके बाद भी गांव के लोग इतने टैक्स देते थे। जनेऊ जलाने का वर्णन है, ब्राह्मणों की हत्या का वर्णन है, मंदिर तोड़ने का वर्णन है, ये सब वर्णन है। ऐसा नहीं कि कोई कपोल कल्पना मैं बता रहा हूँ आपको। आप किताब पढ़ेंगे बर्नियर का, तो बर्नियर ने मंदिर तोड़ने की बहुत सी घटनाएं बताई कि वहाँ से कैसे औरंगजेब ने सोना चांदी लिया है। और वो उसके बाद भी गांव समृद्ध है, फिर से बना लिया मंदिर उन्होंने। ये बात सबने लिखा है। अल बरूनी ने भी कहा कि मंदिर तोड़ा,
लूट कर लेकर गया और 140 किलो के दो सोने के दो मूर्तियां, यानी कि लगभग 300 किलो की मूर्ति सोने की दो मूर्ति, चांदी की 200 मूर्ति, 150 किलो की 200 मूर्ति चोरी करके लेके गया, घंटे, सारे सामान, और जो घंटी घड़ियां जो थी, जो बाकी जो ज्वेलरी थे वो सब भी, लेकिन फिर से खड़े कर लिए। सोमनाथ मंदिर को लूटा, फिर खड़े हो गए सोमनाथ मंदिर। तो ये पैसे आए कहां से, ये मंदिर फिर से कैसे खड़े हो गए, फिर से कैसे संपत्तियां आ गई? तो उसका आधार था भारत का खेती और था कुटीर उद्योग। तो गो आधारित कृषि का जो मेरा कॉन्सेप्ट कभी चर्चा परिचय में आया, तो भारत को समृद्धि का आज भी, कोरोना के 4 साल में कहां पर फैक्ट्रियां चल रही थी भारत में, कौन से बड़े इकोनॉमिक चल रहा था, सारे तो बंद थे, फिर भी भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। कैसे हुआ? खेती से हुआ, कुटीर उद्योग से हुआ। तो भारत में हमेशा समृद्धि वैल्यू एडेड के कारण हुआ है, एक्सपोर्ट के कारण हुआ है, यानी खेती होना और खेती में जो चीजें आ रही है उसका वैल्यू ऐड करना और उसको मार्केट दुनिया में डिमांड के आधार पर सप्लाई करना और उसमें से धन दुनिया भर से आना, यही बेस रहा है, आगे भी यही होने वाला है। तो उसमें बर्नियर ने लिखा, लेकिन ये सारे ट्रेंड को तोड़ा है मैकाले। तो 2 मिनट मैकाले भी बोल करके मैं फिर समाप्त करूंगा, क्योंकि बाकी समय समय पर मैं चर्चा कर लिया हूं। भारत में मैकाले 1828 में आया। मैकाले क्यों आया भारत में? तो भारत में जब 1802 या 3 में लंदन में एक मीटिंग हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग हुई। उसमें जो मालिक लोग थे, जो शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई हम भारत से जो सामान लाते हैं 1 रुपया में, उसको 300 रुपया में हम दुनिया में बेच रहे हैं, 300 टाइम्स में प्रॉफिट में बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी डिविडेंड हमें कम क्यों मिल रहा है? व्हाई वी आर गेटिंग सो लेस? तो उन्होंने उसका एक कमिटी बनाया और कमिटी भारत में भेजा कि भाई जरा पता लगाओ कि क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमको इतना नहीं हो रहा, 300 रुपया में बेच रहे हैं, उसके बाद भी हमको प्रॉफिट नहीं आ रहा है। 100 रुपया तो मिलना चाहिए, 50 रुपये मिलना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है हमको शेयर में। तो एक टीम आई और टीम ने सर्वे किया। 1818 का एक रिपोर्ट है पेंडागास्टर का, जो बड़ा जबरदस्त किताब है, और ये ब्रिटिश क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, किताब अवेलेबल है, कभी मौका होगा। ब्यूटीफुल ट्री करके है, 14 वॉल्यूम में लिखा है उन्होंने, धर्मपाल जी ने, और 46 साल मेहनत करके उस किताब को लिखा है, ब्रिटिश आर्काइव से निकाल करके, और उसमें से म्यूजियम से उन्होंने उसको पूरा कोट करके उस किताब को लिखा है 14 वॉल्यूम में। अभी हिंदी में उसको कुछ रिपिटेशन तो हटा करके 10 वॉल्यूम में बना है, और 10 अलग अलग है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, मिनिस्ट्री है, मेट्रोलॉजी है। उस मेट्रोलॉजी के ऊपर पूरी एक किताब ही है, किस प्रकार से माइन से, यहाँ से सोना चांदी लोहा ये सारी चीज़ें माइन हुई है, और उस माइन को कैसे वैल्यू ऐड किया। आज भी जो डायमंड है, जो दुनिया में एवरी ईयर आउट ऑफ 100 टॉप कटिंग्स भारत में ही होता है, और पूरे विश्व के 80% डायमंड के कटिंग आज भी भारत में ही होता है। थोड़े बहुत इजराइल में है, यहूदी लोग करते हैं, और व्यापार भी यहूदियों का ज़्यादा है, लेकिन दुनिया के 80% डायमंड या तो जयपुर में या तो सूरत में कटिंग होता है। सूरत अभी नंबर 1 वर्ल्ड का हो गया है डायमंड कटिंग में। आज भी वैल्यू एडेड भारत का ही है, और अभी 20 साल के बाद देखेगा दुनिया में भारत इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाने वाला है। ये जो नई पीढ़ी आई है ना, ये पीढ़ी आपको इसको मौका मिलेगा, अभी तक इसको मौका नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा, तो ये आगे बढ़ेंगे। तो मैकाले ने जब 1818 पेंडागास्टर का रिपोर्ट आया, तो उसमें उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई भारत के लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, और यहाँ जो सरकार, जो माने जो ब्रिटिश लोग ऑफिसर्स आ रहे हैं, वो ओवरहेड एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। एक ब्रिटिश ऑफिसर आता तो उसके साथ जूता पॉलिश करने वाला, उसके खाना बनाने वाला, उसके बैलगाड़ी, उसका घोड़ा गाड़ी, उसका कपड़ा आयरन करने वाला, या उसका बागवानी करने वाला, सबको लंदन से लेके आता है। तो कभी छोटे छोटे काम के लिए लंदन से क्यों लाए हम यहीं के लोगों को ले लेंगे, नौकरी कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ के लोगों को अप्लाई करो। और उसमें भी क्या होता है कि गर्मी के समय सब चले जाते हैं, यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो 4 महीना सब बंद रहता है अंग्रेजों का सिस्टम पूरा, इसलिए गर्मी छुट्टी भारत में होती है। वो गर्म बर्दाश्त नहीं करते, छुट्टी थे, तो हम आज भी गर्मी छुट्टी मनाते हैं, 2 महीना हमारा छुट्टी रहता है, जबकि भारत में गर्मी छुट्टी कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ बरसात की छुट्टी होती थी, सब खेती में चले जाएं, सारे लोग 2 महीने जाके खेती करें, क्योंकि वो जीवन का आधार है, सालों भर उसमें होता है। आज भी बिहार के लोग खेती के समय आ जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं भाई, क्योंकि खेत करना है उसको, थोड़ा अनाज जमा हो जाएगा तो घर के लोग खाते रहेंगे, बाकी हम जाके कहीं कमा के आएंगे, 10 महीना काम करेंगे। लेकिन ये 2 महीना जो हमारे यहाँ बरसात की छुट्टी होती थी, बंद हो गया, गर्मी की छुट्टी हो गई, और सब अंग्रेज चले जाते हैं। तो ओवरहेड एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, कम करो।
तो कैसे कम करें? तो नौकरी को लगाओ। तो नौकरी करना तो भाषण का प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश सिखाओ। तो इंग्लिश सीखने के लिए तो लोग आए, लेकिन नौकरी नहीं कर रहे हैं। बोले कपड़ा धोना नहीं करेंगे, बर्तन धोना है नहीं करेंगे, खाना बनाना नहीं करेंगे, बागवानी करना नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए अमीर लोग आते थे। तो उन्होंने कहा भी क्यों नहीं कर रहे नौकरी ये लोग? तो 1825 के आसपास में एक रिपोर्ट आई कि भारत में सब हाईली क्वालिफाइड हैं, और वे किताब में है, ब्यूटीफुल ट्री में, बुक में ये पूरा वर्णन है। 98% लोग हाईली क्वालिफाइड थे। मद्रास प्रेसिडेंसी उस समय उनका ब्रिटिश का रोल था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई में था उस समय। अभी जो मद्रास था पहले, चेन्नई अभी जो है, पहले मद्रास था। तो उसमें उन्होंने कहा इस बात को कि भारत में 98% लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, तो 2% वो लेस, यानी डिग्री तक पढ़े हैं। ये कौन लोग हैं? ये अमीर बाप के बेटे हैं। जैसे तैसे डिग्री पूरा किया इन्होंने, 4 साल 5 साल में डिग्री पूरा किया है। लेकिन क्वालिफाइड तो वो भी थे, लेकिन 98% लोग। और मजेदार बात है, ब्रिटिश ने उस समय जो सर्वे किया है उसमें दलित, मुस्लिम सबका किया है उन्होंने सर्वे को, सारे रिपोर्ट प्रिंट किया है उन्होंने उस किताब में। पढ़िएगा तो आपको आश्चर्य होगा। आउट ऑफ 65,000, 46,000 दलित लोग थे। 4,000 मुस्लिम महिलाएं पढ़ती थी, मुस्लिम महिलाएं पढ़ रही थी मद्रास प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज में, और ब्राह्मण केवल 2% थे या 3% थे, माने 2.7, 2.8% थे, यानी लेस देन 3% ब्राह्मण थे। ये सारे उन्होंने उस समय डॉक्यूमेंट किया। मैं बात कर रहा हूँ 1825 के आसपास। तो उस समय 4 प्रेसिडेंसी बनाई थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, चेन्नई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, लाहौर प्रेसिडेंसी, ये चारों में। और लुंगलू जो था लाहौर में था, उसने रिपोर्ट दिया कि उस समय की जो नॉर्थ वेस्ट की जो इंडिया थी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो था, और साउथ वेस्ट की जो इंडिया था, ईस्ट इंडिया था या साउथ इंडिया था, ये चारों की जो रिपोर्ट आई है, 7.5 लाख स्कूल थे, 7.5 लाख स्कूल, और गांव थे 5 लाख। इसका मतलब एक गांव में 2 से ज़्यादा था, मोर देन 1 था, और हाईली क्वालिफाइड था 100%। और सब उसमें उन्होंने लिखा है कि आई हैव ट्रैवल्ड। तो जब उसको पता कि अभी क्यों नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो 28 वर्ष का उम्र था उस समय मैकाले का, और मैकाले बहुत अच्छा भाषण देता, विंग पार्टी का था, और पहली बार उसने लीड से जीत गया था, और वो MP बन गए थे, और जोरदार भाषण देता था। कैथोलिक वो प्रोफेसर था जो थियोसॉफिकल कॉलेज में पढ़ाता था। तो लोगों ने कहा जरा इसको भेजो भाई। तो मैकाले आया, चेन्नई में आया, आज जो मद्रास है, और वहाँ से बॉम्बे गया और पूरे भारत का सर्वे किया। तो इसको जब बेलगाम के पास पहुँचा तो इसके पैसे ख़त्म हो गए, तो उसने थैंक यू, तो उसने कहा कि बेलगाम में कि अभी घोड़ा गाड़ी को बेचा, और बेचने के बाद उसने वहाँ से घोड़ा गाड़ी से गोवा में गया, और गोवा के कैथोलिक चर्च में रहा, वहाँ से पैसे लिए, उसके बाद बॉम्बे से वो दिल्ली गया। उसने कहा कि बॉम्बे को हेडक्वार्टर बनाना चाहिए। उसके सजेशन पर बाद में बॉम्बे गेटवे ऑफ इंडिया वगैरह बना। तो बहुत बाद में हुआ। तो मैकाले ने जो उस समय जाने के बाद जो उसके जो भाषण हुए हैं, वो भाषण का जो ये है, ये इसमें दिया है, ए क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, मॉरल, इन इंटेलेक्चुअल। यानी हमको एक ब्लैक इंडियंस बनाना है जो भारतीय होंगे, कलर और उसके रक्त जो है वो उसका भारतीय होगा, लेकिन उसकी सोच, उसकी चिंतन, उसका विचार वो सब विदेशी होगा। हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। बाद में मैकाले के बहुत लंबा विषय है, मैकाले पर ही आप कई किताबें हैं, सब उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि कोई छुपा हुआ चीज़ है, ये नेट में उपलब्ध है। ये मैंने डाला आपको, ऐसा नहीं कि मैंने डाल दिया। ब्रिटिश में जो उन्होंने भाषण दिया है पार्लियामेंट में, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया, आई नॉट फाउंड ए सिंगल बेगर और ये थीफ, और उसमें ये भी कहा कि आई नॉट फाउंड ए सिंगल रिच मैन इन इंडिया। तो अब रिच मैन क्यों नहीं मिले कि भाई ये गांव में अगर सारे अमीर लोग हैं तो गरीब कौन है? अगर गरीब नहीं है तो फिर अमीर कौन है? सब समान है फिर। तो ऐसे बहुत सी बातें उसमें थी। फिर मैक्स मुलर ने उसको आगे बढ़ाया। मैक्स मुलर कभी भारत में नहीं आया, ना वो अंग्रेजी जानता था, ना फिर वो संस्कृत जानता था। वो जर्मनी से अंग्रेजी पढ़ा और अंग्रेजी से संस्कृत पढ़ा, और पूरे भारत के सारे साहित्य का कबाड़ा बनाया। और मौका होगा, मैं इसमें लिखा हूँ, उन्होंने मैगस्थनीस ने ईस्ट इंडिया में लिखा है, वो एक कोटिंग किया हूँ, ये PPT में कभी दे दूंगा आपको, मौका होगा तो देख लीजिएगा उसमें। और कैसे उपनिषदों को, दर्शनों को उन्होंने चेंज किया, और आज हम पढ़ रहे हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं हमारे साहित्य के बारे में गलत बातें, ये मैक्स मुलर ने उसको इंटरप्रेट करने में गड़बड़ियाँ काफ़ी की। और उसने कहा कि मैं क्यों कर रहा हूँ? उसने कहा कि वी हैव कंकर्ड वंस बट वी नीड टू कंकर मोर, एंड नॉट फिजिकली बट वी हैव टू कंकर ऑन इंटेलेक्चुअली। इंडिया के बारे में कहा कि उसके
बुद्धि पर कब्जा करना है, और वो सारा डिटेल्स मैक्स मुलर का है। तो इसको मैं अभी यहाँ समाप्त करता हूँ। कौटिल्य के बारे में मैंने चर्चा कर दिया है। कौटिल्य के बाद में और भी कई साहित्य बहुत लोगों का है। भास्कराचार्य की है, उसके बाद वराहमिहिर की है, और जो आर्यभट्ट था उसने पूरे, आर्यभट्ट ने काफ़ी डिटेल्स पूरे निकाले हैं। तो मैं अभी इसको समाप्त करूंगा क्योंकि समय भी हो गया है। तो ऐसे कई उन्होंने, जो आर्यभट्ट ने जो मान निकाला, जो डिस्टेंस निकाला, सूरज की रोशनी पृथ्वी तक कैसे आती है, और सूरज, जो पृथ्वी सूरज की ओर घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी में घूमती है, और ये सारी डिटेल्स है, और ये आज प्रमाणित है। यानी आप राइट साइड में देख रहे हैं तो वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कितना है, और आर्यभट्ट ने जो बताया वो मान्य है। तो ये सारे भी डिटेल्स हैं। तो आर्यभट्ट का भी लंबा चौड़ा विषय है। भास्कराचार्य की किताबें हैं, बड़ा जोरदार है भास्कराचार्य का। और ये जो आज कैलकुलस वगैरह आप देखते हैं, एपरेटस जो बहुत सी चीज़ें आ गई है, लॉगरिदम वगैरह का आ रहा है, सब भास्कराचार्य ने वर्णन किया है। उस किताब है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही हवा में बोल रहा हूँ। वो सब किताबें उपलब्ध है, वो सारे टेबल्स उपलब्ध हैं जो उन्होंने फार्मूला दिए हैं, और त्रिज्या को कैसे ये करना वो भी दिए हैं। आजकल चाइना का बहुत, आप व्हाट्सअप में देखते होंगे कि ये पजल्स जो बनाते हैं ना, ये सब भास्कराचार्य का दिया हुआ है, और सब 1200 साल पहले की है। 1200 साल, 1300 साल वराहमिहिर की किताब है। बोधायन का सूत्र, इसको बीज गणित कहा है। बीज गणित में जिससे आपको लाइन निकालना है, एक सीधी रेखा बनानी, तो कैसे बनाएंगे आप? जो परफेक्ट 100% परफेक्ट अगर एक लाइन खींचना है, एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो कैसे करना है उसके बारे में कहा है। हमको कई बार लगता है कि दो बिंदु को मिलाने से हो गया स्ट्रेट लाइन, तो उन्होंने कहा नहीं होता है ऐसा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन करने का भी एक फार्मूला उन्होंने बताया। तो ऐसे बहुत से विषय हैं, फार्मूला है। मैं इसको यहाँ समाप्त करता हूँ। आपको मैं रहूँगा, कोई और बात पूछना तो बताएंगे। श्री सुरभ्यै नमः। Thank you so much, sir, for opening up the layers of history. History got unfolded before us. Sir started connecting, from one historian to the other historian, and he tried to present before us the vast, glorious knowledge of India. अगर हम बात करें ट्रेडिशन की, ट्रेडिशन का जो हिंदी अनुवाद होगा वो होगा परंपरा। और अगर हम भारतीय ज्ञान में देखें तो हमारे ज्ञान में, हमारे भारतीय ज्ञान में एक परंपरा रही है। However, unlike this, the Western world has been anxious about a tradition because they never had a tradition. So this is one. और एक चीज़ और मैं यहाँ पर जोड़ूंगी बहुत जल्दी। जब हम बात करते हैं टूरिज्म की, तो हम कहते हैं टूरिज्म ऑफ इंडिया। नो, इट इज़ नॉट सो। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज़ भारत दर्शन। भारत दर्शन या भारत भ्रमण। तो भ्रमण यानी वॉन्डरिंग करना, और वहाँ पर है वेगाबॉन्ड वॉन्डरर्स। यहाँ पे वॉन्डरिंग करना विद अ पर्पस, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर एज एन एक्सप्लोरर। और भारत दर्शन है, I mean to see what India possesses, what India contains, what India has, historically, the present and the past. और वैसे भी देखा जाए तो कोस कोस में पानी बदले और चार कोस में वाणी. So this has been the beauty of India. When we talk about, these are the catchphrases of our times. One is circular economy, then the other one is inclusivity and sustainability. But अगर हम अपने पुराने पास्ट में जब हम जाते हैं तो आई थिंक ये हमारे कल्चर में, हमारे इंडियन सोशल सिस्टम में ऑलरेडी सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी हमेशा से रही है. जेंडर वॉज नेवर इन कॉन्फ्लिक्ट. सो देयर सो मेनी थिंग्स दैट सर हैज़ ब्रॉट टू द फोर. और इस इतिहास को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. हम इस टेक्नोलॉजी टेम्पल में खड़े हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारे भारत के इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है. इसलिए भी हमारी जनरेशन्स को, so that they can build up. And Macaulay, whatever disaster Macaulay did to the Indian education system, I think India has to really come out of it, and it is reviving, and we are hopeful that India will retain its lost glory. Thank you so much, sir, for this wonderful, very, very wonderful, lecture of yours. And may I now request our chairman, sir, to come onto the stage for the felicitation. Please, sir.
Yes, sir, we have the award. Yes, we have the award. Sir, no, no, sir, we'll sit here. Thank you so much, sir, for this wonderful session. Thank you so much. Now may I request our chairman, sir, and our director, sir, to grace the dais. And our, no, we have the award. Yes, we have the award. Beta, get the chairs, get the chairs. हाँ. Two chairs quickly. One more. So on the dais, now I invite our former director, Dr. D.K. Paul, and our former director, Professor D.C. Panigrahi. Please, sir. A huge round of applause for them. So they have been the strong stewards of the Indian Institute of Technology, Indian School of Mines. What we see today is built on their, hard labor. Every year, we have this custom of acknowledging the achievements of our achievers. So to start with the award ceremony, I would like to begin with the IMTR Awards, the Inder Mohan Thapar Award. This award has been instituted by Shri V.K. Arora, the Chief Mentor, KCT Group. In total, we have 16 IMTR awards for this year. This award comprises a certificate and a check of rupees 32,000 for each awardee. It is given to the one who has carried out exceptionally good research in a chosen field from the respective department. We are honored to have with us Mr. Sushant Kumar Mishra from the Thapar Group. May I request Sushant sir to please come on to the stage? I now request Sushant sir to say a few words, and thereafter we'll have the award ceremony. Good afternoon. It's really a privilege and a profound honor to be here on this historic day and to represent KCT CSR, to join you in celebrating a century of scientific inquiry and research, and also celebrating the Inder Mohan Thapar Research Awards is really truly special. The award carries a very rich heritage and legacy, which is deeply personal to each one of us at the KCT Group. Inder Mohan Thapar, or IMT as he was fondly known, had a very strong, unshakable belief in the talent, integrity, and excellence of Indian School of Mines. And this institute has really, validated that belief. Over the years, generation of graduates who have been trained at this venerable institution have not only formed the backbone of our company and our organization, but also that of the country's mining industry. It would not be an exaggeration to say that the country's mining industry stands on the shoulders of this great institution.
By supporting and recognizing this outstanding research done here today, we are only honoring that legacy of IMT and also reaffirming our faith in the scholars who will drive the next wave of transformation in energy transition, in sustainable resource management, the areas which would prove very, very crucial and critical in our nation's future. Progress is achieved when capable minds get the opportunity to give free rein to their creativity and push boundaries. The research being recognized here today is the result of the excellent ecosystem that this institution has created over the years. That is to combine academic rigor to solve the problems of the real world. We are really grateful to IIT ISM for inviting us to this centenary celebration and for providing us the opportunity to partner them in fostering excellence in research in a very vital field like mining. Finally, most important, our heartiest congratulations to the 16 awardees who represent the best of the storied institution. May your work carry forward the legacy of IMT to build a better tomorrow for everybody. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. And yeah, you may join in. You can be on the stage if you wish. Thank you. So, may I now call upon the recipients of the IMTR Award. So you may join in, sir. The recipients of the IMTR Award. The first is from the Department of Applied Geophysics, Dr. Kuldeep Sarkar. Dr. Kuldeep Sarkar. I would request the guide, Professor Upendra Kumar Singh, to come onto the stage and receive the award on his behalf. Dr. Rakesh, the next is Dr. Rakesh Kumar from the Mechanical Engineering Department, and his guide is Professor Shibayan Sarkar. Huge round of applause to the recipients. The next is Naila Rizvi from the Department of Computer Science and Engineering, and the guide is Dharavat Ramesh, Professor Dharavat Ramesh. I request the student and the mentor to come onto the stage. Next is Naila Rizvi and Professor Dharavat Ramesh. Next is from the Department of Mathematics and Computing, Dr. Riya Ghosh, and the mentor is Professor Anthony Selvin. The next is from the Department of Physics, Dr. Rakesh K. Sahu, and the mentor is Sridhar Sahu. The next is from the Department of Fuel Mineral and Mining Engineering, Dr. Amrit Anand, and the guide is Professor Shalini Gautam. The next is from the Department of Chemical Engineering, Mr. Sapan Kumar Pandit, and the guide is Professor Aditya Kumar. The next recipient is from the Department of Mining Engineering, Dr. Ashok Kumar, and the guide is Professor Dheeraj Kumar. Next recipient The next recipient is from the Department of Electronics Engineering, Dr. Pankaj Kumar, and the guide is Shubhendu Kumar.
The next recipient is from the Department of Electrical Engineering, Dr. Gautam Goswami. Dr. Gautam Goswami, and the guide is Professor Sukanto Das. The next IMTR recipient is from the Department of Civil Engineering, Dr. Sajal, and the guide is Professor Pranesh Roy. Now next, from the Department of Petroleum Engineering, the recipient is Rohit Kumar Shaw, and the guide is Professor Ajay Mandal. Now comes the Department of Applied Geology, and the recipient is Dr. Suren Nayak, and the guide is Anup Krishna Prasad, A.K. Prasad. The next recipient is from the Department of Chemistry and Chemical Biology, Manaswini Raj, Dr. Manaswini Raj, and the guide is Sumanta Kumar Pardi, Professor Sumanta Kumar Pardi. Next, from the Department of Environmental Science and Engineering, Dr. Priyanka Mishra, and the supervisor is Professor P. Shravanan. Now next we have from the Department of Humanities and Social Sciences, Ms. Kumari Sarika, and the supervisor is Professor Suchitra Maji. Sucharita Maji. So a huge round of applause to all the IMTR recipients. Yeah, that's all. Now, every year on the Foundation Day, it's customary to acknowledge the long association of our employees with the Institute. Those who have completed 25 long years serving the Institute are felicitated on this day. So the Long Service Award, for the Long Service Award, may I now request our Chairman, sir, and our Director, sir, to once again come forward and give away the Long Service Award. The first goes to Professor Randeep Kumar Das, R.K. Das, from the Department of Mechanical Engineering. Professor R.K. Das. Uh, 25 years of long dedication and service to the Institute. I request Panigray sir as well as D.K. Paul sir to please join in giving away the awards. Please, sir. Next, I call upon Professor R.K. Upadhyay from the Department of Mathematics and Computing. 25 long years building, shaping the department and the institute. Now may I call upon
Next, I call upon Professor P.K. Jana from the Department of Computer Science and Engineering. Our departments, our academic departments and the institute cannot run smoothly without the dedication and the hard work of the officers and the staff. So here I call upon Shri Saeed Ansari, Junior Superintendent from the Department of Electronics Engineering. Next, I call upon Dr. Sunil Kumar, the Technical Officer from the Department of Mining Engineering. Now I call upon Dr. Partha Day, the librarian from the Central Library. I congratulate all the long service awardees for completing 25 years with dedication, hard work, and love for the Red Building. Thank you, sir. Now we move on to the next category of awards, which is the Ismana Academic Excellence Award. And the first recipient is Miss Akshara Rao. She's from the Department of Applied Geology. She's not, okay. Mr. Pratyush Singh from the Department of Applied Geophysics. Mr. Ambar Khare from the Department of Computer Science and Engineering. Mr. Vishwa Teja from the Department of Electronics and Communication Engineering. Mr. Ayush Prasad from the Department of Electrical Engineering. Ms. K. Sanika from the Department of Mining Engineering. Let's put our hands together for Sanika. Mr. Jonathan Thomas John
from the Department of Mechanical Engineering. Mr. Sachin Bangrava from the Department of Petroleum Engineering. The International Scholar of the Year awardee is Prateek Sinha from Bangladesh. He's from the Department of Environmental Science and Engineering. Now we come to the Ismana Ganesh and Pushpa Thakur Research Excellence Award for the year 2024-25. This award goes to Professor Ijaz Ahmed from the Department of Chemical Engineering. The last in the list is the SBI Best Non-Teaching Group of Employees Award 2024. So this is given to the departments, to the sections in the administration. This time, this award goes to the Office of Dean Students Welfare. I invite all the members of the Office of Dean Students Welfare to come onto the stage. Shri Naveen Kumar, Assistant Registrar. Shri Shivji Pandey, Assistant Registrar. Shri M.K. Mangalam, Assistant Registrar, Shri Manoj Das, TS, Shri Anup Kumar Kashyap, JS, Hospitality, Shri Shashank Rajoria, JS, Admin, Shri Santosh Shaw, JS, Sports, Shri Avinash Kumar Prajapati, JT, Electrical, Shri Arihant Kapil, Junior Assistant, Shri Harshal Bhagat, Junior Assistant, Hospitality, Shri Samarjit Kumar Shaw, JA, Hospitality, Shri Rajesh Kumar, Lab Attendant. I invite the DSW also to come onto the stage, Professor Sunil Kumar Gupta. They get this award for successfully developing and launching the scholarship portal, smooth fee collection, managing insurance coverage, upgradation of hostel infrastructure, organizing government activities like Ek Bharat Shreshth Bharat, Janjatiya Gaurav Divas, etc. A huge round of applause to the Office of Dean Students Welfare. The next office which is going to get this award is the Office of Dean R&D. Congratulations. Shri M.N. Pandey, the DRPPS and Officer in Charge R&D. Shri Kamesh Kataria, AR Project, Officer in Charge Project Accounts. Shri Subhash Gop, JS Cash Section. Shri V.R. Shankar, JS, Shri Prateek Kumar, JS Accounts, Project Accounts, Shri Dimpaj Kumar, JS R&D Admin, Shri Bipin Paswan, JS R&D Admin, Shri Prashant Mahto, SA Joint
project purchase, and Shri Shivram, project accounts. I request the Dean R&D and the Associate Dean R&D also to please join in. Professor Parthasarthi Das and his team. This award goes to the Office of Dean R&D for successfully implementing the new accounting and payment concept of Government of India, that is payment through ZBSA, TSA, CAN and TSA hybrid module through PFMS platform, maintenance of accounts for all research projects, managing the project purchase through GEM with limited manpower. We also have the other members in this team, Shri Unnat Kumar Singh, project accounts, JA project accounts, Shri Ravi Kumar Gupta, JA project accounts, Shri Gandhi ji, JA project accounts, Shri Sharab, JA project accounts, Shri Mukul Kumar Kesari, JS accounts, Jim Johnson Tudu, JA R&D admin, Shri Vimal Ravani, JA R&D admin, Ms. Sujata Kumari, JA project purchase. A huge round of applause to the Office of Dean R&D. Thank you so much, sir, for doing the felicitations. Now I move on to a very special session, a panel discussion of the present and former directors and also of the present chairman of ITISM Dhanbad. Ladies and gentlemen, with immense pride and warmth, I welcome you to one of the most special sessions and the last session of our centenary celebrations, a gathering of those who shaped the very soul of ITISM. Our former directors, Professor D.K. Pal sir, a hearty welcome to you, sir. Professor D.C. Panigrai sir, a very hearty welcome to you, sir. And our present shapers, Professor Prem Vrat, hearty welcome to you, sir. And to our director, a hearty welcome to you, sir. Each of these distinguished leaders, I request all of you to please remain in the hall. Please do not leave the hall. The event is not over yet. Each of these distinguished leaders have carried the torch of this institution through different eras, different challenges, and different dreams. And today, they come together on a shared platform, on a common stage, to reflect, to reminiscent, and to reimagine the future. So, we have the mics here, the hand mics. This panel is not just a discussion, it's a bridge across 100 years of leadership, a dialogue between memory and vision, and a tribute to the minds that guided ITISM through its most defining chapters. And today, the Institute, the entire community of ITISM witnesses this defining chapter. So, sir, I'll just take an opening remark from each one of you. The Institute has already journeyed through 100 years. And today we are at that vantage point where we are also looking forward to the next century. So what is your take? What are your emotions like at the moment? So may I request D.K. Paul sir to start with. Thank you very much for having me here. See, my mind goes back to 1995 when I came, and at that time it was only ISM, and proud ISM at that. Indian School of Mines, it was known as Indian School of Mines. Earlier, of course, it was
Indian School of Mines and Applied Geology. And basically, I am an applied geologist. So when the AG was removed, it became Indian School of Mines, and it became very famous. And it was known all over the country by mining school. That again pained me. It is not a mining school, it is a mining educational institute where we train people to take up the responsibility of mining in different sources. Now, all of you are aware of the history of the Indian School of Mines. And I think you'll excuse me if I go back a few years and remember that. So the location of Indian School of Mines by the then government of India in Dhanbad was very appropriate at that time, although after a few years it was considered a geographical disadvantage for various reasons. We did not go into the details of that. But Indian School of Mines have gone from laurel to laurel and has contributed enormously in the development of the energy sources. And we are very proud, indeed very proud, of the alumnus who are occupying very critical position in the industry and in the academia. And when we have gone abroad, we have found people from this institute have made their own mark in the chosen field, very well known in their respective fields. And in my respective field, I knew some very big names who were very proud to be an IIT alum, ISM alumnus. It was the bondage between the ISM faculty, ISM students, present and past, was so strong that I am from IIT, your chairman is also from IIT, we had spent a long time there. I found the bondage here was much beyond what is possible elsewhere. Now, as you know, the mining engineering students have to undergo a lot of field training under very tough and rough conditions, and with a young mind, with no money at the pocket, they used to go to the field in the camp, and when they used to meet the top boss of the mining department at that point of time, they would say, "Oh, you're from ISM, bring your luggage, stay with me. You don't have to worry about food, lodging, everything." So that was the bondage, and that bondage continued for many years. Even today it is continuing. So when I came 2 days back, I met a lot of people I've never met in my life, but they were proud that we are all belong to the same fraternity, the name of ISM fraternity. Now, of course, it is IIT ISM fraternity. Now, our primary emphasis, our primary importance was on energy resources, namely coal. Now, mining is supposed to be a very rough and tough job. And that's why the popularity of the mining amongst the modern students who are very adept in playing with computers and sitting in air-conditioned rooms was very noteworthy. And not many people were willing to come to these tough and rough jobs. So that is why the job conditions was improving. And it was at that point of time that the administration of that time thought that should be some new branches here which would be attractive to the students. And so that I will use a management jargon. Cost per student, that was very high when you compare with the established IITs, namely IIT Kharagpur, IIT Delhi, IIT Madras, and all. So the fund crunch was felt. So although you realize that there was a shortage of faculty, shortage of educational facilities, shortage of modern equipment, but we had to make do with it. So that change was absolutely necessary, not for economic reasons, but also for scientific and technological reasons. So the management of that time thought that we should have other disciplines, but those disciplines should not be standalone departments. They should be supplement to what was being taught, what was being practiced in ISM, and that's why the computer science and management was considered. And then many other departments came, which was a supplement to the ongoing department. But would you imagine that when the climate changed, the environment was not that popular, that fashionable at that time, ISM thought of starting the management, the Center of Mining, Environment and Research. That was very appropriate, very popular, and they were doing the present day problems, and which was very creditworthy. And that's why the Department of Mining Environment was very flourishing. And then, of course, what we get on the Earth's crust is not our choice. You have to mine whatever is available. And if it is low, you have to beneficiate it, upgrade it so that it is noteworthy and it can be usable. And we all know that our Indian coal is high in ash, but you cannot do with it. You cannot throw it away.
like a child in the family, if he's not up and coming, you cannot throw him away. So all those beneficiation was considered, and that's why the mineral processing department was started. Now, this is a brief history in my time, but I am very happy that the school was converted to IIT ISM, and the first step was to remove the front crunch. We went from the UGC to the MHRD. So this single step, conversion from MHRD from UGC to MHRD, increased our fund. So we had some liberty to play with the money and contribute to the growth of the institute. And that's why we are seeing so many faculties, so many instruments. So at that time, I remember in the geology department, there was a single crystal diffractometer. That was the only fashionable instrument, automatic. So you study the crystal in all its aspects. But now I find, when I go through the brochure, the varieties of equipment that has come, that has increased the capability, the research capability, and that is why our faculty is also contributing a great deal up to the modern time. Thank you, sir. So one of the major contributions that we see, apart from the expansion, was from UGC, we went under the banner of MHRD. And then, of course, the other was, we were, there was a small faculty. With those small faculty number, to conduct an entrance examination all over India was indeed very difficult. There were a lot of weak links, lot of mishaps happening. So when we went to IIT JEE with a lot of efforts, that improved, that took away the burden from us, and the students were being taken from the IIT JEE. So this is the small history in brief. Now I'll tell about what is happening now. Although I am retired, I still try to keep in touch with what is happening, particularly in my field, which is applied geology. And in fact, I spent a lot of time in Geological Survey of India, and I was very pleased to see that before I came, Geological Survey of India is also celebrating 175th year of its establishment. So my mind went back that at that point of time, the then government of India considered it fit that mining, mineral resources need appropriate action, and the resources have to be augmented. So GSI, ISM, and other engineering colleges came roughly at the same time, and they are celebrating. Now we are reaping the benefit of the early thought. But now when you read the newspaper, you all hear about rare metals, we all hear about rare earth resources, and we also hear about subordinate metal like cobalt, nickel, copper. Now what is rare earth? I was using rare earth in my studies abroad, but rare earth is really indeed rare, but it is rare, and that's why nobody should touch it. We used to use the rare earth abundances using modern equipment, neutron activation, and similar process, to study the origin of rocks and the evolution of rocks, and to study the relationship between the rocks. But So now I'll come back. I'll just go to Panigray, sir, and take his first impressions when we stand at the threshold of the 2 centuries. Yeah. Then we'll just take the quick impressions from each of us, and then. So yeah. So that is the history. Now we have to find out. We have to really look for rare metals and contribute to the national growth. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Professor Rajni. Now I'll tell you, I'll take you within 5-7 minutes, I'll take you through the last 50 years. And I'll add also a few things which Professor Dikepal sir just spoke now. Actually, the institute will be as good as their leaders, I must say. And we had outstanding chairpersons in the past. I'll start with J.G. Kumaramangalam. J.G. Kumaramangalam was the chairman when we were students here. And he was the brother of Mr. Mohan Kumar Mangalam, who was the coal minister in the cabinet of Madam Gandhi. And he was the person who was instrumental in nationalization of Indian coal industry. And he emphasized, Madam Gandhi was not interested to nationalize it, but he emphasized time and again that the people are getting exploited in the hands of the private people. So J.G. Kumaramangalam, his brother, was the chairman of NMDC, and he was simultaneously the chairman and managing director of Hindustan Zinc Limited, 2 big metal companies of the country. And he was studied from abroad, and he was outstanding the speaker, as well as he is good sports person, and he led from the front.
Then after Mr. Kumar Mangalam, we had one more chairman. He was with management science background like Prashar Prembrad sir, and Prashar Prembrad sir may be knowing him also. It was Mr. A.N. Hoxher. A.N. Hoxher, he was the chairman of ITC group. There are several companies actually. There are several companies in ITC, and he was the chairman of total group. And he was staying, once we had opportunity to go and invite him by some purpose, and he was given a complete floor in Taj Mansingh Hotel for his family to stay. It's a big hotel, and complete floor of a hotel is a five-star, very costly hotel, and one floor was occupied by Mr. Hoxher. Mr. Hoxher studied actually from Harvard Business School. And he was outstanding. If you see him, the speaker as well as a good manager, he was outstanding actually. Then after Mr. Hoxher, then Mr. B.K. Rao came. He was an erudite. And he was Secretary Ministry of Mines, he was well-read, he was a geologist, he was IAS. And we could know that throughout the day he will not read any files or sign anything. And he will go to his office. On one side of the office, you will see a pile of books. He will keep reading the books. And in the evening, he will sit down and clear the files. If people complain that, no, sir, the files are pending, he will clear it on the same day. But he will stay in the evening. But he was a voracious reader and absolutely fabulous speaker, Mr. B.K. Rao. And after Mr. B.K. Rao, Mr. Lahiri came. He was also an outstanding leader in the sense that he was with the Secretary Revenue in the Ministry of Finance. He was collecting the total money for the Government of India for budgeting purpose, which Secretary Expenditure used to distribute through the budget. And he was also the director for Asia Pacific in the Asian Development Bank. And he was also a good leader, and he led us for quite some time. In between, there was a small period when Mr. Pandey came, and he stayed there for a very short period. But subsequently, Prashar Mishra, then now we are very fortunate to be led by Prashar Prembrad. Again, actually, the technology, then the management cycle has come. And Mr. Hoxher used to be a very, very gracious person. And he used to help the students, help the institute, help the faculty members. He had the outstanding, very long hands in the government also. And similarly from the directors also, and I can tell the Prashar Marua, then Prashar D.K. Sinha, then Prashar A.K. Ghosh, they were all outstanding persons actually. Prashar Marua was a very good administrator and very strict person. And he put the institute in the track when it was going down actually. Then subsequently Prashar Sinha came, he was with the management background. Basically he's a mining engineer with management background. And he was also a very good leader, very good person. Very good person. We may not get such a person actually very easily. Then after that, Prashar Ghosh came. He was also known all about the world, and he was also the DSc honoris causa was given by foreign universities to him. He was also fellow of many academies. And after that, Prashar Banerjee was there for 1 year. Then Prashar Pal came, and there was a shift during Prashar Pal's time. The thought was to put this Indian School of Mines, what he was telling, that in the IIT entrance examination system. And that was somewhere around 96, 97, I think we were, 97, we were put into the IIT and we are combined with the IIT JEE entrance examination system. And after that, I became the chairman of IIT JEE from the institute. But the difficulties what we are facing in the IIT JEE in all those meetings, actually admission committee meetings, that paved the way for a strong fight for IIT. Because every meeting when you used to go, then there will be the sword hanging on our head. They'll remove the Indian School of Mines from the IIT JEE system. IITs, many of the good IITs, the directors, they were not of the very good opinion that Indian School of Mines should be kept there. We are having now so many IITs. Only it should be for IITs. Remove Indian School of Mines. Our own alumni being the chairman of IIT JEE, organizing chairman Mr. Pandale from geology, he was from IIT, he was working in IIT Bombay, himself made a proposal, no, Indian School of Mines should be removed. And that was in the year of 2005. I was very surprised. And finally, with the help of the secretary HRD, I requested him, no sir, this is not a good thing. This is a very old institute. Much before it, the IITs came, this was existing. We were remaining there. We were there actually in the country, and we have served the country. And as a result, we are there. So I kept feeling
that this arrangement is not permanent. Because when the numbers will swell, like 22, 23 IITs, definitely a day will come, they will remove it, so we'll go into the second tier institute like NITs, that will be very bad for the institute. That put us a strong thought that no, we should become IIT. Other than there was no other way. The second was the scale. And Professor Pal sir, I'm not just because he is here, I am telling this is not correct. And he struggled. The other major contribution that the IIT scale, till then actually the teachers and all the staff, they were getting the UGC scale. So he was the person, the chairman. They struggled and got the IIT scale for the campus. And that was in 2006, and possibly 5th pay commission or somewhere. 6th pay. And unfortunately, in the next pay commission, which came in 2006, which was announced in 2008, we were removed from the IIT pay scale. And because it is dominated by the thoughts of the IIT people, so we were removed. Again, we were thrown back to the UGC. So when I stepped into the administrative block, this was one of the agendas. We should become IIT and we should get the IIT scale. These are the very important thoughts actually. And another thought I must tell you, which paved the way for the development in the campus. Actually, when the sir was the director, he was a good researcher in his own field. The institute was requiring a mass spectrometer during those days. And in the Department of Geology, other departments can use it. During those periods, the cost of mass spectrometer was more than ₹1 crore, that is between 95 to 2000. And DST was ready to give that money to make it a center for other institutes of the country, because geology is one of our leading department. And but they wanted to see the institute before sanctioning this money. The team came, they organized the meeting in the GJLT, and there was a one-day workshop to look into the facilities and other things. On that one day, actually, there were at least more than 10 power cuts. So they went, in the evening, they went back with the thought that no, Indian School of Mines should not be, though everything was all decided that the institute is getting mass spectrometer. So it was decided in the evening that it will not come to Indian School of Mines. It didn't come. So this was the thought actually which helped us know we should strive for a very stable and the stable power. And when we were students also, every 5th minute there will be a power cut, because we were in Bihar Electricity Board during those days, and there was no power outside, there will be no power inside. We used to be hooked up with a generator. And the generator during the daytime, it will be for the institute. In the evening, the hostels will come. Half of the colony will be in dark. So there used to be the situation. So those are the thoughts, the shortcomings what we had. We wanted to remove those at some point of time. And we did it. And we got opportunity and we did it and we struggled to do it. And there are other things also, maybe in the second round I'll tell. Yeah, yes, I'll come to you again. Thank you. So may I take the impressions from our director, and then I'll come to our chairman, sir. Okay. Actually, I must compliment Professor Mishra for thinking of inviting the former directors, and even for a while I was also former chairman, so it's with service break I'm here. So it's a very thoughtful. The reason for that is as simple as that an institution which does not remember its elderly people who contributed to bring it at this level will not flourish. It's like a family which does not care for its elders. So therefore, it's a very thoughtful of Professor Mishra. In fact, when I became the first director of IIT Roorkee, and Roorkee is a small place, a lot of people after retirement used to settle down there. First thing I did is to tell that in all major functions and ceremonies and convocations, all the faculty members who retired and settled in Roorkee would be permanent invitees in all functions. And this single action, the kind of goodwill it brought, and they became my think tank, so it's very thoughtful of you. I wish there were more such people, and very, very nice of them to have come, so it's very good, I must compliment you. However, I would have been happier if there are more listeners to think about the history. Yes. In fact, what the two great Yes, people have I said, I wish wish that there were more people, because we are now half of those who are available to us before the award ceremony. Now, the second thing I wish to share with you, in fact, in lighter vein, you must have been tired. He mentioned about Mr. A. Naksar, a very brilliant man. Just take.
He was also the chairman board of governors of IIM Dhanbad. I am Calcutta. So in one of the board meetings, somebody asked him, is IIM Calcutta an autonomous organization? He said, yes, IIM Calcutta is an autonomous organization working under this section officer of Ministry of Human Resource Development. So there are very smart way of brilliant way of saying things. So he was a very brilliant management thinker. Now coming to the specific occasion, I wasn't very sure what the agenda for this was, but I believe that IIT and ISM, I have been an IITian for the last 63 years. But I was very proud when I was given this opportunity because before becoming chairman, I only went through Dhanbad railway station using Kalka Mail to go into Kharagpur. I didn't even come to this campus. But it's a great opportunity that you had IIT and ISM. But this can be, and I give this thought to ponder over, particularly the very senior alumni. As you mentioned, they're very proud of being an ISM alumni. Obviously, when you're a small group, you're bound to have a closer bonding. This can work wonderfully well. But unfortunately, mining has not become the most sought after profession in this country. Because the people who, in the JE system, one of the last options is go for mining. This used to happen. Now, having become an IIT, it's a great opportunity as well as a challenge. And that's why I ponder over the way we conduct ourselves on this. And I'll perhaps cite the example of University of Roorkee. They were also very proud as Thomsonians. In fact, the Roorkee Alumni Association used to be called Thomson Alumni Association. And the alumni, like you say Imsonite, they used to say Thomsonian. When I became the first director, I proposed that let it be called IIT Roorkee Alumni Association. And most of the, like Dhanbad, even Roorkee is a very oldest institution, all those people are top shots. They were up in arms against this decision that why should Thomson Alumni Association be called IIT Roorkee Alumni Association. I am a person who does not believe sledgehammer approach, so I called a meeting of some 300 to 400 senior people and had a great, in the auditorium there, at 3-4 hours of discussion, passionately. I simply asked them a question, how many of you know who the Thomson was? Most people thought the people who are alumnus of Thomson, Alumni Association, I said, he must have been the first principal like Penman. Very few people know about who Thomson was. In fact, he had nothing to do with the Roorkee University. He was not the first principal. He was the Lieutenant Governor of United Province stationed in Agra. His only role was that my papers for conversion of setting up a college in Roorkee he was sympathetic towards the file. So in fact, when it started, it's called Roorkee College of Engineering. In 1853, when he was promoted and died on the way to take charge in Madras as governor of Southern Province, due to dysentery, he died on the way. He could not. In memory of this person, because his positive support, the Roorkee called Thomson College of Civil Engineering. When I told them this, they were taken aback. I said, if you do not know who Thomson was, how do you expect an ordinary people in the society to talk about Thomson, but ask even illiterate person what IIT is? Everybody will know what IIT is. And therefore, we get a readily available letter without any publicity what you are. And believe me, at the end of that 3 to 4 hour, unanimous voice of all the alumni that we will call it IIT Roorkee Alumni Association. And even today, when a person who graduated in 1960, my own vice chancellor is an 81 graduate of University of Roorkee. I don't stop her when he says she's an alumnus of IIT Roorkee. So therefore, it's an opportunity for you to have used a wider bandwagon for which no publicity is required. At the same time, it can be a challenge too. Now I'm coming to challenge. How एक तो tongue twister है, बार-बार बोलोगे तो. IIT, ISM, IIT, ISM, IIT, ISM. दूसरा, when you were in ISM, you were without contest the number 1 in mining. You didn't have to say anything, but you were number 1 in mining. Today there are 23 IITs. And the population of mining engineers in that population group is relatively weak. Therefore, an opportunity is to encash a wider brand
was a way out. In fact, for 3 years I said IIT Roorkee bracket mein formerly University of Roorkee, so that we are not writing it off. We are remembering that great institution. And today, IIT Roorkee is accepted as a brand as it is. Now, I'll give an example, I'll leave it for you to ponder over, because I thought it's an opportunity for me, although I'm only telling people who perhaps may not be that much, they're all faculty here as I understand. The IIT and ISM is like a sangam of two rivers. And all sangam is a very pious thing. Sangam Priyag, sangam of two rivers called Priyag. And Allahabad is the Priyag of Priyag is called Prayagraj. Now, IIT and ISM is a great opportunity as a sangam. But as you know, as a sangam, even after sangam, the two rivers run parallelly, maintaining their own identity. Ganga flows as Ganga and Yamuna flows as Yamuna. It will no longer sangam. Therefore, a sangam becomes sangam when two great rivers, Yamuna and Ganga, both are great brand value. After this confluence, it is named only one river. It becomes Ganga thereafter. Yamuna gets upgraded to become Ganga. And then, from then onwards, both the rivers get upgraded to that level of Ganga because they merge their identity into a bigger brand. So if the kind of opportunity we had, and therefore perhaps the people can think about these lines. Otherwise, out of 23 IITs, IIT ISM Dhanbad, because of the perception that it's a mining institute, we are losing on many counts, and that's why in the ranking of institutions, IIT ISM does not come that, at least that has been my desire to see it. It deserves to be within the top. That is it's a great institution, I'm proud of it, but public needs to be told about it. So what do we do about it is a challenge. So it's a great opportunity, great challenge, but then with commitment, sincerity, and passion about excellence, I'm sure you can achieve the place that you truly deserve to be on the top 10 of the IIT system. So your impressions. IIT ISM at 100. Sorry? IIT ISM at 100. So, many things has already been told by the ex-director as well as the present chairman about the philosophy of ISM, about the philosophy of IIT ISM. Now, I have not seen ISM. I am totally into the IIT ISM and the ISM portion, because I have not seen, I cannot comment on that, but I can definitely comment on the IIT aspect. Now, in the IIT system, if you see, as already told by Chairman Sir, there are multiple departments, and each department will compete against each other in a intra-institute and an inter-institute manner. Just like each IIT will be having one brand department, and the other department will try to catch that department. Take for example IIT Delhi, because I am from IIT Delhi, so I know about it. There, the student choice is computer science, brand choice is electrical engineering, and the technology aspect, if you see, it is a mist. So, there is a reference frame available in the inter-institute. And that reference frame has to be created. And when you create that reference frame, initially it will be very, very difficult by the stakeholder to accept that reference frame. But once you accept that reference frame, you will feel jubilant and you will be thinking that I should change the reference frame, and hence
you will go ahead in the race. So, in the IIT framework, when we say that we should be known in the community, as Sir was also mentioned, the perception, there is a lot of work to be done by the stakeholder. In case of any educational institutions, the stakeholder are faculty, student, and the administration section. The administration means who do not directly teach, neither they are directly taught. They help in the process. So these three sections when we take need to have a synchronization, and among that synchronous model, there will be little bit non-synchronous always happen, and hence a synchronizing torque is needed to pull back the non-synchronous entity among all these three, so that these three will move in a circular fashion and centrifugal force will be adjusted among themselves. That's why all the three stakeholders need to be taken care in a periodic way, because when something rotates, after a period it will only come, and you have to give a velocity, angular velocity. In its own it will rotate, and when it will come to your point, you just push it. Then again it will start revolving. That's why if we go, then we will be having a stable operation, and we will be established in the society among IIT as a society. And I am sure our faculty members, students, and the third component, which is the staff or employee, whatever name you give, they all are geared up in that manner. In this 1.5 years, I have seen that motion, and I am sure the motion will continue further with acceleration. Thank you. Thank you so much, sir. So what I gather from the first round is that ITISM was not built in a day, and it was the hard work right from Sir David Penman to the ones who have carried on the baton, the successive generations. You all have put in your sweat and blood into the creation of this institute and shaping it. With all the push and pulls that we have had, and with all the decisions that we could make at that given point in time, yes. We But alumni is a superset of student stakeholders. Then I created a three-dimensional field of the Jeria coal field, being a geophysicist. And I started my later on career with the water resources in India, and contributed a lot of contribution in the scientific source finding of the water resources across the country. So this is all I would say. We can really play a role in that only. And also, as a country called, for the Switzerland, I would say that they have a Switzerland Development Corporation, SDC. I was a country coordinator in distributing money for the NGOs, and we made a program. I think you have heard about the Anna Hazare watershed program we created. We created the Deen Baddu biogas plant. Also, we played a role in that. So I would say alumni can play a lot of role. हम लोगों ने आपको से क्या पाया है, हम लोग आपको वापस भी दे सकते हैं. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. If ITISM is a majestic tree, its strong branches are its alumni. Thank you so much, sir.
So just moving on to the first and just recapitulating the first round. So ITISM was not built in a day, and the baton was passed on to the successive generations, and each of you have put in your hard work, sweat, and blood into the shaping of this institute. I would like to, the first round was a little heavier because I think majority of us are faculty members from the department, so we often see the grass is greener on the other side. So we would like to know what were the challenges or the anxiety. You know, normally, like Panigre sir said, that he had previous directors, you know, his predecessors like Paul sir, Marwa sir, and others, so many others. So how, I mean, the anxiety of influence. When I say anxiety of influence, I mean to say that the pressure to perform, because there's somebody who's already set the ball, you know, in motion, and then the challenge to, you know, take it forward. So how do you look? And at the same time, you know, recast your own identity, not to come under the shadow of the looming presence of the predecessor. Because normally when we talk as a community, when we talk that director, his time, okay, this director, now like that. So, I mean, so you as an administrator in that leadership position, how did you, you know, confront this anxiety of influence? Panigre sir, and then maybe I'll move on to everyone. Just quick responses to this. Actually, I'll just give you some examples here. The perception, how it creates a problem. I was just very carefully listening here. Mostly people think that, like Prashar Palsa told, that the coal mining and all those things. But let me give you the total picture, actually, what the Indian School of Mines contributed to the country as a whole. Okay. Now, coal is dominated by the graduates of Indian School of Mines. They have contributed. Now 1 billion ton of coal production is happening in the country. You will find they are in the leadership position in most of the places. This is one form of energy. Go to the oil. Our students are doing exceedingly well there. They are also in the helm of affairs of the oil production. One of our alumni who discovered that Kakinada deposit, actually, that gas deposit, for which he got Padma Shri. So there are many such, that is in the oil and gas sectors, there are many people who have contributed. So in gas also, oil and gas also, we have contributed very significantly compared to any of the IITs of the country. Singular institute, if you take it, is the Indian School of Mines. Come to the uranium. That is the third largest source. And that's a very critical source. And in the very first the day of the parliament, after the independence, Keshav Malviyaji, what he told as the energy minister, any country which is not good at the defense and the oil resources, that country may not be a very influential country in the world. You just see the defense. Our students only, they improved the total uranium production of the country. And they brought it from one mine to the second mine in 89. And in 2010, the uranium production between 90 and 2010, it was 5 times. It increased. As a result, 2004-5, the Western world, they thought that it will be prudent to sign the 1-2-3 agreement. Otherwise, they themselves will grow and achieve a much higher capacity of uranium production. So they have also contributed very significantly in the uranium. Come back to the rare earth. You just see rare earth is completely dominated by Indian School of Mines graduate, mineral processing and mining. You go to Chhatrapur Sea Beach, you go to Kerala, you go to any place. Similarly, you go to the noble metal production, that is gold. There's one the place which produces the maximum gold of the country, pure gold of the country, is the mine in close to Raichur, and that mine is 3.5 tons of pure gold it produces. That is close to total pure gold production of the country is around 4 tons. 3.5 tons is produced from there, and that is led by the student of Indian School of Mines. So if you go to zinc, India was 12th or 13th largest zinc producer in the world.
Now you just see within last 3 years record, now India has gone to the third position, third largest zinc producer of the world. And zinc is used in batteries and it's one of the very critical minerals. And that is led by Indian School of Mines students, that is IIT ISM students. So, and other than that, the silver production, India was never in the race of silver production. And the byproduct was silver from the zinc, and they're producing, and India is the 10th largest producer of silver production today. Absolutely. So silver production. So that is also led by Indian School of Mines. Absolutely, We have contributed sir. so much. Yes, so the role of our alumni. But in fact, these are not highlighted in the right forum at the right place, and as a result, it is going under the carpet. But if you see the other side, IITs have also contributed. I don't say that they have not contributed. They have contributed a lot to the software and the computers, actually. Many of their graduates are doing well there. But many of their graduates are doing well for abroad or some of the top firms of the world. But our students have produced and they have served the country to the bottom level, actually. And this is the only institute in the whole country where the president and the prime minister, they visited on a single day to the institute. On the same day, they have visited here. That has never happened in the case of any IIT. This was so important. At 1950, both Dr. Rajendra Prasad and Pandit Nehru, they visited on the Silver Jubilee occasion. That is both of them, the leaders of the country. So it's not that unimportant institute, but we have not. Can you give me some chance of? Yeah. It seems my comment has not been taken in that spirit. No. I'm not saying that ISM Dhanbad did not. ISM Dhanbad was the best known in mining and geology, and the best graduates from this institute have done wonders but they have done it in the field of mining and applied geology. Whereas the IIT system is a bigger canvas. No, sir, I didn't refer to the Therefore, discussion, my point actually. here is, the focus that they have done so, if they're expected to do that, they will reach the top heights in that area. So, by all standards, the country is proud of what they've done. The country is proud of ISM. But now the question is that once it's a part of a bigger family of IIT, No, true, sir. one has to understand the implications of that, and therefore and this is very clear in the QS ranking, in the QS world ranking, IIT ISM Dhanbad is 20th best institution, the best department in the world. True, sir. 20th best. Not only first in the country, but in the overall QS university ranking, we do not find a place in the top 1500 even. So the point I'm therefore making is that look at a bigger picture, while on a smaller scale, that means department-wise, you continue to be the best, and I am very proud that you can be. So what I perhaps feel that leverage the two brands. For example, IIT is a brand, ISM is a brand. If the two have a multiplier effect, the outcome would be enormous. No, sir, Provided actually. this is a multiplier effect and not IIT minus ISM, it is IIT into ISM. Sir, No, sir, sir, I didn't refer to- I would like to No, sir, I reframe my didn't refer question, to- sir. No, I No. didn't, just, sir. Actually, sir, I didn't reply to your, the dialogue, actually. I was just giving a broad picture of what Yes. IIT ISM is now. But we should keep on highlighting this. I was Yes. not referring or discussing or dissecting your thoughts, sir, actually. I was just giving the total picture. It was a total picture. Just moving on to the next, sir. So just quickly from Panigre, sir. So definitely, when we step into the role as the leader, right? So we have a set of predecessors, before us. So who impressed you the most, and did you feel the pressure of performance? Pressure of performance is always, all the directors, they feel the pressure of the performance. I have no exception. But I worked hard, others are also working hard. And I made multiple teams. So as I told you, a leader is as good as his team. Yes, So I perfect. identified the right people, made multiple teams. And I must salute our chairman. There was one gentleman in the field of management, Peter Drucker. I read one of the articles in the Harvard Business Review. What he told that gentleman was, some other person was writing about Peter Drucker, is actually the father of the modern management science. He told that had there been a Nobel Prize in the management, you would have got 5 Nobel Prizes in 5 different years. So actually, and what he told, that is, have a very strong monitoring system so that the performance will improve. Set the goal, then
make the team, then monitor the performance of the team. So I put the lot of monitoring things actually so that the performance went up. Otherwise, it was very difficult to go from 80 total SCI papers in the whole Yes, campus. It went to 1200 and PhD from 20 And that to percolated from you onto and us. I put even I read a little bit of management True, things sir, also. true. And another thing which Chairman sir, I'm a boy, I'm a small boy in front of him in the management science. I can tell you regarding the balance scorecard. So I took some of the thoughts from the balance Yes. scorecard from David Kaplan, Dr. Kaplan and Dr. Norton and tried to put that and take it down so that to reach to that height of the SCI publication, what a scholar has to do actually. Before submission of the PhD, Absolutely. you have Absolutely. to write 2 SCI papers, get I'll- it published, then you are allowed to do. So that I percolated from the top to the bottom so that I can go to 1200 marks and 1200 SCI publications. That for the got whole introduced, campus. yes. And the faculty strength was 250 to 300 during those days. So it will be A lot nearly of 4 to 5 transformative years. moves So did this was done. come up. And as a result, it paid back. I worked hard very Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'll go to Paul, sir, and quickly, sir. Yeah. The pressure of performance, in short, Yeah, I because think the next 2 rounds are going to I be think like, the efforts Yes. and the action was all unidirectional. Everybody was unanimous that we must get higher prominence. yes, Our research output, not only by the number of papers, but the quality of papers. Everybody is unanimous on that, and we all worked in that. I think if we work as a common purpose, I think we'll get there. There is no doubt about that. to our chairman, sir. Sir, the pressure of performance. We get a lot of like leadership lessons from you, but on your experiences on the pressure of performance, did you feel it? Actually, the pressure for performance is a contradiction term by itself. Performance can never come through pressure. Performance comes through intrinsic motivation and commitment to the purpose. And for that, I must tell you, because fear and excellence do not coexist. It's a well-known fact from Deming's 14 Principles of Quality. And therefore, first thing is, fear and excellence do not coexist, because if you're afraid of being underrated or thrown out, you'll put in the bare minimum required to retain the job. That's it. But if you want to excel, there has to be passion and zeal. And for that, I may like to share this. I use this equation E is equal to MC squared that I Yes, is you known often for it. quote. In the process of transformation of Roorkee, I use this E is equal to MC squared, and it's now very popular in my name. E is excellence, M is motivation, and C is commitment. So excellence is motivation, commitment square. And therefore, if you are doing a job half-heartedly because of pressure, I'm answering that question quantitatively. If you're doing a job half-heartedly because of the pressure of performance, C is 0.5, commitment is 0.5, half-hearted. E is 1/4. But if you are passionate and you have the enthusiasm, passion and zeal to do, because you're intrinsically driven, C becomes 2, E becomes 4, and therefore corollary is excellence and indifference do not coexist. If I see the enthusiasm of people in this hall, listening to the former people, you'd not blame me if I call it indifference. And indifference and excellence do not coexist. Therefore, performance doesn't come through pressure, it comes from intrinsic motivation. And intrinsic motivation doesn't care for external reward. The job, the satisfaction of doing a job very well by itself is a great reward by itself. So people need to be driven for a purpose much beyond them. And if you do that with passion and zeal, nobody can stop you from excellence. But if you're doing it under pressure, nobody can make you excellent. A madness, a drive is essential. So a quick thoughts from you, sir. Quick thoughts. Sir. I will agree to Chairman sir and also to Panigrai sir, but I will go in a little bit moderated way. The moderated way is, if suppose you have not taken a rasgulla, you do not know how the rasgulla tastes for it. So somebody has to bring you with something to the rasgulla station
and told that you take the rasgulla, I am paying for it 2 rupees. Once you took it, then you will spend 2 rupees and take the rasgulla. So, probably, I am also disappointed with this situation. Probably, we would have these doors would have been closed. So, so I actually, I was told like that also, but I experimented this time that whether free thing is working or not. But I had a mixed experience. Today is the last date anyway. But yes, I agree with sir that E equal to MC square works well, and that need to be actually committed, and performance and the approach of doing the things are all correlated with each other. In the context of pressure, what you are saying, or the stress, it is a relative thing. Stress, what is stress and what is not, need to be defined by yourself. If you can properly define it, then you can overcome the stress very easily. Just like people say, if there is a wave coming in a sea, you just bow your head, wave will go. But if you keep straight, then you will be falling in the sea. So therefore, you have to manage the situation in such a way that you are not getting stressful. Otherwise, you will increase your blood pressure. So quickly, sir, now I'll go back to Panigri. So quickly, this is the last round, and then we'll have the rapid fire. Sir, your leadership style, autocratic, democratic, leave it as it is. What was it like? So if No, you have to actually, comment in a No, actually, I line. believe in laissez-faire type of leadership. Yes. But at the same time, I'll encourage and I'll also work harder than my own team members so that they get motivated to do work. I was working harder than, at least 2 hours harder than each faculty member and the administrative officers. I told them in the open meeting, if you are leaving at 9 o'clock, you expect me to leave at 11 o'clock in the night. That was a challenge. And I used to go around also the campus to see that how many research scholars are working when I leave the office around 11 o'clock. And it used to be a very vibrant campus. Otherwise, it used to be a sleeping campus earlier. I fully endorse the view of Prashant Prembrata sir. It does not come under pressure, but it is a motivation actually, which works better. But let me, at the same time, put one of the new thoughts actually. There was a gentleman called Kondrativ, and he studied all the innovations of different years which happened up to 2000, year 2000. And he proposed a theory known as long wave economic theory. Long wave economic theory. What is this long wave economic theory? That is, he studied that there was a like a disease, dreaded disease like malaria, and the people were suffering. So many the people in the society, they were getting this hit by the malaria. So the society was under pressure. That is, they have to find out an antidote for malaria. And with that pressure, Ronald Ross could give the antidotes. And then after that, the whole world was enjoying. There was no innovations for certain years. Then after that, there used to be another problem for which the people were under pressure, society was under pressure. So another innovation was coming. He observed that after each innovation, that is just like a long wave. It will go in long wave, finally it will reach to the peak, then it will come to the crest, bottom. Then that way it is continuing. The innovations are in a long wave theory. So what he proposed to reduce the length actually, the depression length. So please motivate it. Simultaneously also do the monitoring and other things, how the things are doing it actually. And as a result, you find he predicts that in the first 50 years of this century,
and there will be a lot of innovations which will happen, which will be more than 2000 years what the world has seen. Yes, sir. Now I come to Paul, sir. So your leadership style. What is the rapid fire? What is your leadership style like? My leadership style was to involve everyone and set the target. If a research scholar is enrolled in Indian School of Mines for a PhD, I don't say that you have to have 3 papers, you have to have 4 papers, 2 of them should be referred in overseas journal. You set the limit and observe if he's doing the proper thing and if he's doing something which is relevant at that point of time. And for the students, I was absolutely very positive that the students should attend the classes regularly, don't stay away from the classes, and I used to monitor the performance of the students very, very carefully. Because cumulatively, the students, the research scholars, and the faculty will improve. The director can only oversee and see that the things are all right. Thank you. Thank you. I'll go to our chairman, sir. Sir, your leadership style. Actually, it's very difficult to answer questions of this kind. To me, the way I have been operating or working, operating is not a good term in current times. I believe that a director or a vice chancellor is one amongst equals of a process. Yes. Therefore, I always treated myself a professor first. Even now, in all my designations, I insist professor what we added. I do that. So, in fact, my style was that I was one amongst equals, and was lucky that I'm there. Any one of my professors could have been in this seat. So, once you do that, ego will come out of you. Because therefore, what I did, I set up an example of leading by setting examples instead of telling कि memo दे. मैंने आज तक अपनी जिंदगी में memo नहीं दिया किसी को. That's something you know. Because उससे आदमी deet बन जाता है. So I did what I expected them to do. For example, as a director in Roorkee, they were surprised कि पढ़ाता है वाइस चांसलर पढ़ाता नहीं था कभी वो साहब होता. I taught a course every semester. I guided BTech projects. I guided MTech, and I produced 2 PhDs. One of them was an alumnus of this place, Rupesh Pati, Department of Management Studies. He did his PhD with me from. So I myself did what I expected my professors to do. And if a director can teach and guide research and publish papers, not a single professor came to me कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा मेरे पास बहुत कुछ administrative load है. So lead by setting example. If you want people to be punctual, be the first there. So I did not have to tell anyone. And secondly, I picked up the best people. From a system to be head, deans or whatever, but allowed them to perform without micromanagement. And their performance at the end of the day, at the end of the year will tell you. And trust and credibility was the 2 criteria on which I would in fact be insisting, so that once you are trusted and people consider you as manvani and karam ek hi baat karenge, the trusted and credible. Yes, sir. You don't have to say, people would automatically, and that's why I didn't have to say, if I say something, almost everybody accepted. बोला ना मैंने कि जो, the Thompson alumni session up in arms against me, 400 लोगों को बुला के 3-4 घंटे debate करी. They could have hit me out of the, the kind of a love they have for Thompson, but I convinced them, and unanimously at the end of the day, everybody said that no, we'll go for IT Roorkee. So my way of convince or get convinced, open debate, and no personal grudge, no personal agenda. These were the that I was. Sir, team, from you, yes, your leadership style. It's very difficult to say, because now I am actually in the operating director. But still, since you have 10, I will say, in electrical engineering, we read control system. So in a control system, there is always a steady state, which means continuously it is going on with respect to time. If you want to change the steady state from one level to other, you need to create a transient. Now, if the transient is very big, then it may become unstable. Means it may not reach to the second steady state. If the transient is small and appropriate, then it will reach to the next steady state, which I desire. So, try to create transients at different locations. See how the system is responding to the transient. Some transient may die out very quickly. Somebody will be having a second order damped oscillation. Somebody will be having a critical oscillation.
And if you take those critical oscillations to be the main agenda point, then you will see the outcome in the short term as well as in the long term. So that way, mostly our registrar sahab and other dean and other, where I actually give the transient input comes. And to the faculty member, also this transient is there, and those who respond to the transient are having some oscillations, I know, and those oscillations need to be taken care of. So I'll come to the last round, the rapid fire round. So just in one word, you have to respond to this. One word that defines ITISM for you, Sukumar sir. One word. It is excellence. Sir. One word. In one word, define ITISM. Future, past and present taken all together. One word. A great institution with outstanding potential. Sir, Paul sir. I said it is the integrity of all the stakeholders. Fantastic. Strengthen the core and stimulate the progress. Fantastic. Now the final one. One dream, I'll go to Panigre sir. One dream you still hold for the institute. One dream that you still hold for the institute. I mean, one dream that you still hold for the institute during your time, I think you couldn't accomplish it. Yeah, one dream that you still hold. No, One actually, word, in one I word. fully agree with the chairman, sir, that the institute within 3-4 years should get into that rank within rank 10th, and maybe a little later, maybe 6-7 years, it should get into QS ranking 200. And that should be our agenda. And in that agenda, I have got some thoughts also, because we were taught by one gentleman was Professor P.D. Das, and during our intermediate science, he was teaching us geology, and he was PhD from Missouri Rolla. During those young days, he was teaching us. He was teaching us the Darwin theory, the theory of evolution. And I apply his theory of evolution. He told that you rise and you study to the whole batch and apply this theory of evolution to a practical life. And what he was explaining, that is multiply and vary, let the strong survive, the weak die. So whenever I used to do the major work for the campus, like bringing the power line, almost 20 kilometer right of way, that is we have to take the land and without paying the cost. I was applying his idea. I used to apply one idea, it used to fail, I never get married to that idea, then I'll change the idea, get into other mode and try to get the things. As a result, it happened actually. The hotline 33 kV camp, it entered to the campus. So we should have some ideas initially, and we should not hold on to those ideas and see the performance, keep changing the idea and reach to that goal. And if I can be able to contribute something there also, I'll be very happy to contribute and see this institute there. Thank you. Paul sir, one dream for ITISM in one word. My idea is to see the excel and the faculty. I say, and the faculty to excel in their chosen field and be appreciated by their peers. You see, if you appreciate a football player by a musician, that may not be excellent. But if a football player is appreciated by a footballer, that means something. So I would expect that the faculty and the students excel in their chosen fields, and with that, they carry ISM. So that's excellence, right. From Chairman sir, one word. One word for ITISM, one dream that you have. Okay, I think the one dream is to realize your hidden potential. My one word for dream will be more fellowship to the institute. So, thank you so Not student fellowship, but faculty academic fellowship. So, sir has risen the bar for us here. Yes. So, thank you so much, sir, for candidly responding to all the questions.
and the Institute remains grateful to all your efforts that you have put in so far, and we look forward to getting your support and mentorship again and again. Thank you so much. Now, may I call upon Prabodh Panditji, our registrar, for the felicitations, please. After this, the drone show awaits us. So the show is to start from 8:30. 8:30. 8:30. The felicitations. So may I now request our former directors and our chairman sir and our director sir to please come forward. And Prabodhji, yes, felicitation, our gratitude let us register our gratitude symbolically to Panigrahi sir. First, our chairman sir. I wanted to start with the former, yes, D.K. Paul sir, and thereafter. So, sir, this is a red building casted in frame. No, it's an honor. It's not outside. Now, Panigrahi sir, to Panigrahi sir. To our chairman sir. So thank you so much, ladies and gentlemen. Our director sir is, yes, to our director sir. Actually, he just, poked in and said, yes, hurry up, hurry up. No, no. My apologies. My apologies. So, ladies and gentlemen, please join me once again in expressing our deep gratitude to our former directors, to our chairman, sir, and to our present director, the guardians of our past and the architects of our present and the torch bearers of our future. And now, the media wants a group picture, sir. Sir, the media wants a group picture.
So now I invite everyone for the inaugural of the face recognition system, which is installed at gate number 2, the main gate, gate number 2. So our director, wait, yeah. So, so we declare. So the Mahakumbh, the 7 days long, week-long Foundation Day, Centenary Foundation Day celebrations comes to a closure. But then this also augurs the beginning of many more events, many more achievements, many more success stories to be scripted in time. I thank all the organizing committee members, each and everybody, our steward, our director sir, our mentor, our chairman sir, our previous directors, Prabodh Pandey, the organizing committee members, Professor Dheeraj Kumar, the entire faculty members, the head of the departments, each and every one, the students, everybody, the volunteers, the officers, the staff, each and every one, you all have really put in a lot of effort to actually set this 7 days in motion. We went pillar to post for almost 2 months. We shuttled from one to the other so as to set the things in order. And today, this day comes to a conclusion. Thank you so much. And then we have the drone show at 8:30. So all the activities in the Penman Auditorium is now over. अभी खाली बचा पार्टी. आज रात को DSW सर पार्टी दे रहे हैं for all the staff families as well as faculty families. This time DSW has invited even the children, so it is not simply the spouse, but children are also welcome for the party today at 2 or 3 locations. Before Schoolomin Club and Staff Club. Before that, before going to party, please enjoy the drone show, which yesterday night they did exactly at 12 o'clock midnight when we started the foundation day, and it went to the sky. It was very nice. I have seen the video, though I could not join physically yesterday, but today I will join physically in the drone show. I request all of you to join the drone show at 8:30. Make it at 8. Please arrive at 8. Thank you. And now there will be inauguration of the face recognition system through which our entry gate will be now digitized. Thank you. Thank you all who participated in this week-long festival scenario. पूरा distract कर दिया. कौन डर रहा है? क्यों?